hold your hand. We will hold your hand, and obviously we will continue this journey with you in terms of whichever level you reach and so on. So if you have any difficulties at any stage, day, night, please, our website has our mobile numbers, and we have received calls 11 o'clock at night. We have received calls when people have any kind of difficulty. So please feel free. We will be obviously supporting you, helping you. I personally have been sitting on GMC, General Medical Council's BME forum for nearly last 10 years now. So I have a lot of experience in terms of some difficulties which doctors face when they obviously they are working with the employer. So obviously I don't want to talk about all those today, but just to give you an idea in terms of if you have any kind of difficulty, accommodation, you're looking for something, I think because we have a network, and that network will help you. Just lastly, I would like to mention Association of Pakistani Physicians and Surgeons UK, also known as APS UK, launched our Middle East chapter last year, which is known as APS Middle East. And the year before, we launched APS Europe. So we are actually present in 13 countries of the European Union. APS China is being launched this year in 2 months' time. And we will also be obviously working on APS Africa, APS Canada, APS Russia. All those WhatsApp groups are working. They are small, but obviously we are building those groups. So we are the largest global network of Pakistani doctors as well as allied health professionals. So welcome to today's session. With that, I will stop. Thank you very much, Dulfiz Bhai. These and the purpose of creating this WhatsApp group and doing these sessions was to develop a community of Pakistani doctors. जैसे class fellows के batch होते हैं, they just start, they come together, they progress together. So the purpose of this group is actually कि हम ऐसे ही आप लोगों को UK के अंदर आप लोग आओ, we help you at every step. आपको यहाँ पे जगह जगह के ऊपर गाइडेंस चाहिए होती है. लाइक मैं अभी तक एक प्रॉपर गाड़ी नहीं खरीद सका आफ्टर स्पेंडिंग hundreds of pounds on one car. Then I changed, and now I'm planning to change it again. So this is all about, because I don't know much about cars, I only know about education and training. So that's how it is so much important to have guidance कि आपने घर कैसे रेंट के ऊपर लेना है, कैसे आपने ट्रैवल कैसे कम्यूट कैसे करना है, आपने बच्चों के स्कूल कैसे करने हैं, आपने BRP इवन कैसे कलेक्ट करने हैं, आपने अपनी जो पेज है, लोकम क्लिनिक्स, लोकम कैसे आपने ढूंढने. सो देयर इज लॉट ऑफ स्टफ. जैसे आप न्यू कंट्री के अंदर आते हो एंड यू कीप ऑन लर्निंग. मतलब आप क्योंकि यहाँ के हो नहीं, तो for even if you meet people after 2-3 years who are living here, still there is new information they come to know. And most importantly, we will be here to guide you. अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे कहीं स्टक हो जाते हो, आपकी कोई कंप्लेंट हो जाती है, इवन GMC कंप्लेंट हो जाती है, अब्दुल भाई और द GMC पैनल, हम आपको मतलब वी विल सपोर्ट यू इंशाल्लाह. तो आप बड़ा सिक्योर फील करेंगे अगर आप एक कम्युनिटी के साथ एक एज अ बैच अटेंड होंगे. सो आई बिलीव मोस्ट ऑफ द participants have joined. So I will give the stage to Dr. Rahmatullah, who will carry on all this session and will answer to all your queries. And me, Abdul Faiz Bhai, will be in the background. Thank you. Thank you, Dr. Ali and Dr. Abdul Hafiz. Assalamu alaikum, everyone. I hope my voice is clear to everyone and anyone who's joining us. So basically, now beginning I think it's an amazing journey when you start working in UK. The environment is much different. The exposure to all the education and teaching is much different and advanced than what we see back home. And that's why we have to learn with the intention to serve back, and we're serving back in different ways as everyone is. So let's begin. So now when you start your journey, definitely the first and foremost thing is, what do you do before you start planning for the airport? Most must have got the visa
They must have the visa with them. Now, they're thinking about what needs to be done before airport. And my sincere advice will be for everyone that first and foremost will be to sort out all your CPSP issues as much as you can. There are some issues which cannot be sorted, which can only be sorted once you're here, like a change of supervisor or other things. But then, for example, if you've done your dissertation, if you're submitting it, just submit it right now before you come. If you want to sort your e-log book, sort the part that you've done in Pakistan so that you don't have to email your previous supervisor from here, and that takes time. So everything that is related to CPSP, which can be sorted, please sort it out before you land in UK. And then once you come to UK, I'll explain to that part. Similarly, luggage as per allowance, we all know that. There's nothing to learn from that, but then choose your luggage wisely. I know friends, I know people who would come to UK on the other, oh, it's so difficult to find things in UK. Why not get those, get things like even rice and tea bags and stuff like that, because it's UK. No, we don't know where we'll find it. Don't worry, you'll find everything over here. Use your luggage wisely. And I would say, for example, your if I can interrupt, sorry, आप ना उर्दू इंग्लिश मिक्सर में मतलब make everyone feel more simpler, तो आप साथ उर्दू में भी मतलब you can address. Oh, thank you, that'll be great. मैंने कहा था कि बिल्कुल सही, ठीक है, वो और ज़्यादा clear हो जाएंगी चीजें. सारे पाकिस्तानी है ना हमारे में, तो याद है. Yes, we all are Pakistani. बस वो ये है सही. बिल्कुल, थैंक यू अली भाई. तो यस एग्जैक्टली, तो आपके सामान के अंदर आपके जो लगेज वगैरह है उसमें you need to choose wisely. So rather than getting grocery stuff like कि भाई चावल ला रहे लोग, तेल ले जा रहे हैं कि ओ पता नहीं हमारे पास क्या होगा, frying pans. No, choose wisely. So you need things like your books, which are very expensive over here. You need to choose the other things that you need to be using over here. So choose them, your stationery, stuff like that. So choose your luggage wisely. And when I come to grocery, I'll explain, you can find everything over here at exact same rates and rather sometimes even cheaper. When I say cheaper, yes, Pakistan से सस्ती चीजें मिल सकती हैं आपको and मिलती हैं. So that's how it is. Third thing I mentioned was about protector. Please, there have been cases, and I know जिनको airport से वापस किया गया है because हमारे वक्त colleague थे बेचारे, वो protector लगाना भूल गए थे, and the airport जो security है, the ASF, they did not let him board. So please make sure protector is simple. आपको जिस इलाके में आप हैं वहाँ पे एक overseas office होता है, वहाँ पे तकरीबन 5 से 6 घंटे की एक मेहनत होती है to get this thing. It's like an overseas protector. आप समझे कि insurance type की चीज होती है. Right. Now moving forward, ये चौथा नंबर तो सबको हंसी आएगी कि why have change. So understand, UK is mostly based on card-based economy. सबके पास cards होते हैं. यहाँ पे आप जहाँ भी जाए ना, हर बंदे के पास, टैक्सी वाला भी कार्ड ही एक्सेप्ट कर रहा होता है. आप Uber डाउनलोड करेंगे, Uber cannot be used without having a card, and that will take time. आपका टाइम लगेगा. तो आप पैसे लेके आ रहे होंगे. जब आप पैसे अपने किसी भी कंपनी से एक्सचेंज करेंगे, आपको 50 के नोट देंगे, बिकॉज 50 का नोट सबसे बड़ा नोट होता है. और 50 का नोट यहाँ पे बहुत बड़ा शुमार किया जाता है कि अगर आप किसी टैक्सी ड्राइवर को 50 नोट देंगे तो आपकी तरफ मुड़ के देखेगा, यार ये कौन सी जगह से आ रहा है बंदा, किसने मुझे 50 का नोट पकड़ा दिया. Right? And no one will have. You are such a rich. He will think. Yes, exactly. And they'll say, oh my God, he needs to be, इसको पकड़ के, just kidding. So need to get change. Go to the local जो भी आपकी कहां से पैसे collect करें, 5 और 10 के 5. Why? So the moment, for example, when I landed in Birmingham airport with my wife and kids, you need trolleys. यहाँ पे कुल्ली शुल्ली नहीं होता. यहाँ पे कोई कुल्ली नहीं है. इस पूरी कौम में कोई कुल्ली, सब कुल्ली खुद है. 80 साल का बाबा जी भी खुद ही कुल्ली है. He's doing his work himself. And that's what I learned. 80 years also doing independent, unlike us, right? कि हम उतरेंगे बोलेंगे अच्छा यार यहाँ पे वो कहें कुल्ली कहें कभी आके हमारा सामान उतारे, ठीक है ना. बल्कि मेरे साथ जोक भी होता. I went down and I'm sharing it. You can laugh off at it. मैं उतरा बर्मिंघम एयरपोर्ट में, मैं वाइफ 3 बच्चे एंड बहुत सारा सामान था हमारा बिकॉज वेट ज्यादा था. तो एक वहां पे एक बंदा खड़ा हुआ था एयरपोर्ट का, एंड ही वाज वेयरिंग एन एयरपोर्ट ड्रेस, एंड आई वेंट एंड सेड एक्सक्यूज मी, कुल्ली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई फॉरगॉट. मैंने कहा जी जनाब यहाँ पे कोई कुल्ली शुल्ली है. शी लुक्ड एट मी एंड सेड एक्सक्यूज मी, there are no such people on this airport, what do you want? I said, oh, I'm really sorry, I need a trolley. He said, you can get a trolley from there. मैं ट्रॉली के पास गया, मैं ट्रॉली खींच रहा हूँ, निकल नहीं रही. क्यों? क्योंकि ट्रॉली के जो मशीन थी वहां पे आपको पैसे डालने हैं. And now it's all, we are educated, we know what to do, but then it's a new place. So it's a new place, and therefore you need to understand that
you need to have that. Therefore I'm saying just get 5 pound के नोट, 10 pound के नोट आप मशीन में डालेंगे, आपको बकिया चेंज फेंकेगी, 1 pound वो अपने पास रखेंगे और आपको ट्रॉली मिल जाएगी। और फिर आपको ट्रॉली के जब आप सामान बाहर लेके जाएंगे, देन आपको ट्रॉली वापस छोड़नी होगी अपनी जगह पे, राइट? दैट्स अबाउट द एयरपोर्ट। सो प्लीज कीप चेंज। जब आप पाकिस्तान से आ रहे हो, 50 का नोट किसी को नहीं चाहिए यहाँ पे। 5 और 10 और 20, 5, 10, 20 इज मैक्सिमम। 5, that's what you need to keep with you, right? So always have change before you land. अपने पास change रखें। Now coming to COVID. Now the great thing is, क्योंकि मैंने यहाँ COVID लिखा नहीं, दोस्तों ने पूछा था कि भाई COVID PCR before and after. So as per the UK guidelines right now, अगर आप properly आपकी immunization हो चुकी है, right? Pfizer है, AstraZeneca है, आपकी proper, और अब तो UK has also accepted the Chinese version of it. So UK does not need PCR, but you need to do it. Why? Because your airline will need it. Your transiting place will need it. So for example, I had a friend who landed day before yesterday from Pakistan. He was coming from Islamabad airport and he was transiting via Emirates from Dubai. तो उसने यूके का लॉ पढ़ा कि यूके के लॉ में 7 जनवरी के बाद से जो है ना, there is no PCR needed. Yes, लेकिन एमिरेट्स को चाहिए, 48 आवर्स पहले एमिरेट्स को चाहिए, राइट? दुबई ट्रांजिट करते हुए चाहिए, तो उसको एयरपोर्ट पे रोका गया। उसके एयरपोर्ट पे रैपिड वाला बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो किया गया, एंड देन ही वाज अलाउड टू इम्बोर्ड, राइट? सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक योर पीसीआर। अगर एमिरेट्स, एवरी फ्लाइट विल हैव सम एसोसिएशन विद लैब्स। एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाएं, पूरे लैब्स देखिए जहां से आप करा सकते हैं, राइट? वहां से कराएं। एंड you need so yeah, keep going. आप अपने questions बिल्कुल chat में लिखते ना, I'll let you know. So for kids, you need to Dr. Amreen ने पूछा है, for even kids, so the cutoff, you need to go on the Emirates website and then see. So for example, UK, as I said, UK does not need it, right? But what about the flight? What about the transiting place? What about Dubai, right? For example, they might have a cutoff of 6 years of age, and then it keeps changing. So yeah, so 6 years is the cutoff that I know of. Yes. Many slides moved नहीं किया. I haven't moved my slides yet. Don't worry, I haven't moved my slides yet. So that's the most important thing. Now, once you do that, the moment you land, now यहाँ पे जब आप उतरते हैं, आपको लैंड होने से पहले भी आपको अपना एक PLF बनना होगा, which is your passenger locator form. आपको passenger locator form आप खुद ढूंढ लें online, passenger locator form. Yeah. जो कि आप सबको भरना होगा बिफोर लैंडिंग इन, राइट? उसमें आपकी कोई डिटेल्स होगी, आप कहाँ जा रहे हैं, उसमें आपको एड्रेस डालना होगा। एंड डेफिनेटली जो अकोमोडेशन में रह रहे हैं हॉस्टल में, तो उसके अकोमोडेशन में डालेंगे, जिन्होंने घर कर लिया तो उसका डालेंगे। और फिर यहाँ पे Day 2 lateral flow test आपको बुक कराना है। Now, the cheapest lateral flow test that I am aware of is for 14 pounds. और ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के, जो भी एडल्ट्स होंगे उनके लिए आपको करना है lateral flow test, right? Yes, how to book a lateral flow test? So there's a website. Choose either. I don't think so. I can promote over here, and I don't have names, but you can just search online lateral flow test UK, और आप उसको अपने लिए book करा ले अभी से, because you will need to put a reference number on the passenger locator form. The cheapest is around 15 to 20 pounds. So just choose whatever one is the best for you. Book yourself. Now the problem is that जो आपको जो वो आएगा, आपका जो उसकी किट आएगी, तो यू हैव टू पुट एन एड्रेस फॉर इट, बिकॉज वो किट डिलीवर करेंगे। तो आप जहां भी रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, जो हॉस्पिटल अकोमोडेशन में रहे हैं, तो आप उसका एड्रेस डाल दीजिएगा उसके अंदर, एंड दे विल गिव यू अ रेफरेंस नंबर। ओके, दे विल गिव यू अ रेफरेंस नंबर फॉर इट। तो वो बहुत जरूरी है। मुख्तलिफ कंपनियां कर रही हैं, जस्ट सर्च फॉर इट एंड गो फॉर द चीपेस्ट वन। कोई इसमें सिर्फ देखना गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए, that's the most important part. तो gov.uk में जब जाके देखेंगे ना कि भाई कौन से गवर्नमेंट अप्रूव लिस्ट है, उनमें कीजिएगा। एंड द प्रॉब्लम इज दिस लिस्ट कीप्स चेंजिंग, लेकिन ये महंगा नहीं है, 14 से 20 पाउंड के दरमियान वेरी करता है lateral flow test, ये उसी से होगा, ठीक? So this is before the airport. Now landing in UK, once you land in UK, so at the airport there's nothing much. As explained that you need to have change. आपके पास change होना चाहिए, ताकि आप, मैं तो ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह, thanks to what you call apps, and thanks to Ali Bhai and Dr. Hafiz, I never knew these things, and I faced a lot of trouble when because I didn't have any family in UK, I didn't have any support. मुझे बहुत मसला होता इन चीजों के साथ कि भाई मैंने करना क्या यार, मेरे पास, मैं अभी एयरपोर्ट पर उतर गया, मेरा नेट नहीं चल रहा, मेरे पास सिर्फ पैसे जेब में हैं, मुझे नहीं पता क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता।
Now understand, relax. आप उतरेंगे बाहर, आपकी कोई family collect करने आती है? Can you guys hear me? Ji, yes, we can hear you. Yes, actually, you are talking so nicely that we are hearing you and we are not speaking a word. Yeah, That's no, awesome. there's someone called just messaging Dr. Rifa. She said no audio, so I was just concerned on the chat. No, let's keep going. Yeah, so then you need to know the address, and for address, just remember the postal code. Always remember, pura UK postal code pe chalta hai. If you know the postal code, the taxi driver will take you there. So और postal code यहाँ पे हमेशा इस तरह होता है. For example, एक digit होगा. मैं दिखा दूँ. For example, ये B15 6TH. I guess ये Queen Elizabeth Hospital का है, right? So now it will always be in this figure कि एक नंबर लेटर होगा, फिर 2 डिजिट होंगे, फिर एक नंबर होगा, फिर 2 होंगे, ठीक है ना? आपको ये याद होगा तो आपको टैक्सी ड्राइवर वहां ले जाएगा, फिर वहां वो एक ही जगह होगी, वो एक ही पट्टी होगी, राइट? तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल डॉक्टर फौजल बिल्कुल B95SS बिल्कुल इस तरह ही होगा. आपको ये पता होना चाहिए. आपने टैक्सी वाले कभी कहाँ जाना है, आप उसको बोलोगे B95SS पे जाना है, ठीक है? वहां पहुंच गए, फिर आपको वहां पे excellent written on yours. You need to know this. You need to know this. Now, the moment you get your taxi, the moment now you have two options. The two options. I will prefer the moment you reach your accommodation, wherever your accommodation is, now you buy a SIM, right? Buy a SIM for yourself. Understand, my experience was, can correct me over here as well. Buy a SIM with a monthly package, right? For example, 8 GB package. मैं for example Smarty यूज करता हूँ, बाज़ लोग Laika यूज करते हैं, Big 3 यूज करते हैं. Simple, बहुत सारे options हैं. किसी भी दुकान में आप जहां भी उतरेंगे, वहां किसी भी कन्वीनियंस स्टोर पे जाएंगे, आपके अकोमोडेशन के पास हर जगह, गुड होप के पास भी हैं, जो बर्मिंघम आ रहे हैं, उसके अकोमोडेशन के पास बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर है. आप जैसे कन्वीनियंस स्टोर पे जाएंगे, आप उनको बोलेगा कि मुझे एक सिम चाहिए, मुझे सिम मोबाइल कार्ड, यहाँ पे कहते हैं मोबाइल कार्ड, मोबाइल सिम कार्ड चाहिए, और उसमें मुझे मंथली पैकेज वाला चाहिए होगा. ना मंथली पैकेज यू विल डू इट योरसेल्फ, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव कार्ड. अब यहाँ पे हर चीज कार्ड पे होती है, मैं क्या करूं? अब उसको बोले भाई मुझे ना 8 पाउंड का वाउचर बना दे. बोलेगा क्या 8 पाउंड का मुझे इस मोबाइल के ना वाउचर बना दे आप, ठीक है? तो आपने उसको 8 पाउंड का वाउचर बनाया, मोबाइल में सिम डाली, सिम एक्टिवेट करने के लिए आपको वाउचर नंबर डालेंगे, तो अब आपका 1 महीने का पैकेज 8 GB, तकरीबन स्मार्टी का 8 GB का है, ठीक है ना? 8 GB 8 pounds is very worth it. It's very cheap, and you have free calls throughout UK and free messages throughout UK. The first thing is you pick up your internet. Smarty is 4G. It's always going to 5G now. I don't know about others. I use it, therefore I know. Don't go for big names like Vodafone and stuff. उनके थोड़े से बाद दफा signal issues होते हैं, specifically those working in Good Hope, Heartlands, QE. यहाँ पे थोड़े Vodafone के signals के बहुत issue होते हैं. Therefore, most of the people use these other versions, other companies. So get that first and foremost, and then. Rahmatullah, sorry, can you advise the same कौन सी कंपनी के लिए buy करें? मैं तो Smarty. I will say Smarty. Therefore, I've got 3 names. Yeah, go for Smarty. Go for Smarty. I've used Smarty. I've used Vodafone. I've used Virgin Media, and I've used Smarty. Smarty is the best. The best signals in those working in the hospitals. हमारे यहाँ. Yeah, Dr. Philippines, आप कुछ कहना चाहे थे? Sorry. जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था, उसमें 2 चीजें थी. वेरी स्मॉल नेटवर्क काफी हैं, मतलब व्हेन पीपल जस्ट लैंड इन, तो अगर उन्हें स्मार्टी का फॉर एग्जांपल नहीं मिल रहा ना, तो यू कैन जस्ट गेट पे एज यू गो के ऊपर भी, मतलब यू कैन गेट, मतलब 3 का पैकेज भी है, मतलब मोस्ट लाइकली यूल गेट. लेकिन एक जो लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ऑल एयरपोर्ट्स हैव फ्री इंटरनेट, कि आप जो ही लैंड करेंगे यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू योर वाईफाई इवन ऑन योर पाकिस्तानी मोबाइल. तो इसी तरह अपनी अकोमोडेशन पे भी अगर आपको कहीं भी जाते हैं, मतलब you know, there are free Wi-Fi's available on different places. Just if in case if you are struggling, तो आप मतलब you can connect with people through that route. Yes, and let the family know, because the family will be really, really worried. My for example, my parents, everyone have parents, alhamdulillah, siblings, everyone जो family होती है बहुत होती है कि भाई वो दूसरे मुल्क जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं, बड़े ही दूर जा रहे हैं, तो let them know that you have landed peacefully. Family comes first before everything, right? तो let them know कि भाई अम्मी अब्बू या जो भी हैं कि मैं बिल्कुल खैर आफियत से उतर गया हूँ, लैंड कर गया हूँ, and now proceed your journey. Okay, now proceed your journey. Now moving forward. Now, before food and grocery, your accommodation. So the accommodation depends what you chose. I mean, आपने क्या choose किया है? जैसे बहुत से लोगों ने choose किया होगा hospital accommodation, right? So hospital accommodation, you straightforward go for hospital accommodation, and you just start living over there. There's nothing to worry.
लेकिन फॉलो द रूल्स प्लीज। हमारे साथ हुआ था कि मैं हॉस्पिटल अकोमोडेशन में नहीं था, मैंने अपना घर लिया था क्योंकि मैं फैमिली के साथ आ रहा था। तो जो सिंगल अकोमोडेशन है, प्लीज फॉलो द रूल्स। मतलब रूल्स का मतलब ये है कि देखें, आप जब आएंगे, अभी फरवरी मार्च सर्दी अच्छी खासी बर्मिंघम में हो रही है, 0 to 5 वेरी कर रहा है टेम्परेचर, राइट। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो सर्दी लगती है, बिल्कुल लगती है, कपड़े सुखाने होते हैं। लेकिन एक सिंपल चीज है, लेकिन यार इससे इससे एक बुरा इमेज जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हर जगह हीटर लगे होंगे, तो ये हीटर हमें हीट करने के लिए, हमारे कपड़ों को नहीं, तो आप कपड़ों से मत सुखाइए। इसमें बहुत बड़ी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीजें हैं कि जो ना एक समझे पूरे एक ओरिएंटेशन वीक के अंदर हमारे जो है ना भाई, वो पूरा एक कंसल्टेंट खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा भाई हमें कंप्लेन आ रही है होटल से, अकोमोडेशन से, कि डॉक्टर्स अपने कपड़े सुखा रहे हैं, उसके ऊपर तौलिए सुखा रहे हैं। तो ये ना किया जाए, बिकॉज वो हमें हीट करने के लिए, क्योंकि आप उनको ब्लॉक करते हैं तो सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। सो देयर इज अ वेंटिलेटर सिस्टम अटैच्ड टू इट, सो देयरफॉर यूज इट टू हीट योरसेल्फ एंड perfectly fine, and then you will know how to use other things, right? So अकोमोडेशन के जो रूल्स एंड पॉलिसीज हैं, वहां पे वॉशिंग मशीन किस तरह यूज करनी है, टम्बल ड्रायर किस तरह यूज करना है, तो डेफिनेटली वहां पे आपसे पहले डॉक्टर्स रह रहे होंगे, एंड दे विल बी मोर देन विलिंग टू हेल्प। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर ऑनलाइन भी देखना चाहें, गूगल पे आपको पता चल जाएगा मैंने किस तरह यूज करनी है चीज। यू कैन इजीली एंड सिंपली यूज इट। Now comes, and I'll speak to those who want to look for a house. I'll come to it in a bit later. लेकिन ये उनके लिए है कि जो हॉस्पिटल अकोमोडेशन में रहना शुरू करेंगे, फॉलो द रूल्स, कि जो रूल्स वहां पे हैं बताएंगे आपको कि ये टाइमिंग है। वहां पे एक कोई ना कोई उस घर के रखने वाला होता है, उसका एक नाम होता है स्पेसिफिक, आई फॉरगॉट द नेम। There's a person who takes care of the house. You have to follow the rules with him and follow what he says, right? And one thing, please be polite, gentle, kind. यहाँ पे एक चीज मैंने सीखी है जो हमारे यहाँ नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जब सब कुछ हमारी अपनी तालीम है। बी काइंड। वो बंदा अगर गेट पे बैठा है तो ही इज वर्किंग देयर, राइट। सो ही इज वर्किंग देयर, आई नीड टू बी रिस्पेक्टफुल टू हिम, right? It doesn't mean that he's a chowkidar now, so he's a chowkidar and I can disrespect him. No, I don't have that certificate because I'm a doctor. I can disrespect anyone. No, I'm a consultant. No, I can't. I have to be respectful, polite, gentle, humble, smiling when I'm dealing with anyone, whether it's the person sitting at the gate or person sitting at the door, irrespective. They're working there, but they're human beings and I need to respect them, right? That's the most important thing at the accommodation. Now moving forward, जब पहुंचेंगे तो भूख लगेगी, मस्त वाली भूख लगेगी, क्योंकि अल्लाह भला करे कोविड का जहाज पे खाना पीना बहुत कम हो चुका है कोविड की बरकत से। सो देव कट डाउन देयर फूड सर्विसेज ऑन द प्लेन्स। तो आपको मस्त किस्म की भूख लग रही होगी, राइट। सो व्हेन यू लैंड, यहाँ पे मैंने चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि ना जब आप आ रहे होंगे और खासतौर पर जो फैमिली के साथ आ रहे होंगे, यार शान के मसाले ते, बिरयानी का मसाला ते, वो जो कौरमे का मसाला, ये क्या करें। डोंट वरी, मैंने कहा ना लगेज प्लान करके आए, सब कुछ मिलता है। और बर्मिंघम तो यहाँ के अपने बाशिरा वाइट्स कहते हैं कि दिस इज स्मॉल पाकिस्तान, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग ओवर हियर। हलाल मीट इज, you're not going to the Man of Isle के जहाँ पे कुछ मिले ना, you're in Birmingham or in Dudley, which is almost like Birmingham, or anywhere else which is you have everything available. So go for halal meat. There's very simple search for it. I mean, this is only trusted website called HMC website, which is I think Halal Monitoring Committee, and they let you know, put your postal code and they will show you which shops. Very simple. If you put your postal code, again, postal code runs the entire country. Put your postal code, आपको बताएगा किस दुकान में हलाल आपको बर्गर मिल रहा है, किस में आपको हलाल आपको गोश्त मिल रहा है। आप फॉर एग्जांपल उसी वक्त जाके गोश्त लेके आ जाए, अगर पकाना जानते हैं तो अपने पकाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो गोश्त की बात हो गई, उसमें मुर्गी आ गई, लैम आ गया, मटन आ गया। अच्छा, मटन से मराद यहाँ पे मटन नहीं होता, मटन से मराद यहाँ पे कुछ और होता है, बट यू लर्न। एंड बड़ा गोश्त जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं, ठीक। नाउ कमिंग टू द अदर ग्रोसरी, जो सिंपल ग्रोसरी घर की होती है, ऑयल हो गया, चाय पत्ती, याद रखिएगा उसके लिए डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान, सब मिलता है। यहाँ पे 3 कंपनियों को मैं नाम लिखे, एल्डी, टेस्को, एजडा, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। एल्डी इज द चीपेस्ट, बट यू हैव टू गो एंड वो जाके आपको खुद शॉप करना है। और मुझे अच्छी तरह पता है कि जो गुड होप में जिनकी अकोमोडेशन होगी, जिन दोस्तों की, और तो वो बहुत करीब है वहां पे, वहां जा सकते हैं। टेस्को आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इवन द नेक्स्ट डे और इवन द सेम डे। इट्स कॉल्ड, आप टेस्को का ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आता है वूश डिलीवरी। दे विल चार्ज यू अराउंड 3 to 4 pounds फॉर डिलीवरी, लेकिन आपने जो करना है आप उनकी ऐप पे करें, दे विल डिलीवर द सेम डे, राइट। बट what is the glitch over here? The glitch is you don't have a card.
राइट? पेमेंट सब कार्ड पे होती है, आपके पास कार्ड नहीं है, तो जब तक आपका बैंक कार्ड नहीं बनता, यू बी डीलिंग ऑन कैश. देन द बेस्ट थिंग विल बी टू गो टू प्लेसेस लाइक एल्डी एंड लिडल. लिडल इज ऑल्सो नियर गुड होप के पास, जो बर्मिंगम में है. लिडल बिल्कुल गुड होप के पास वहां पर है, जहां सब बेसिक ग्रोसरी, दूध, अंडे, स्लाइस और मक्खन, जैम, नटेला, जो भी आपने चीजें खानी है वो सब ऑर्डर कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा ईस्ट इंड सुपर मार्केट, ये एक एग्जाम्पल दी है. ठीक, एज द अगेन एज द एलडी, टेस्को, लिडल, ये सारी बेसिक ग्रोसरी आइटम के लिए. जो पाकिस्तानी चीजें हैं ना, आपको पाकिस्तानी चीजें चाहिए, धनिया, पुदीना, मैं घर के लिए लाता हूँ, मिर्चियां, लौकी, कद्दू, सही ना, तो इन चीजों के लिए, और शान मसाले, नेशनल मसाले, ठीक है ना. जब बेगम कहेगी भाई लाओ, भी बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है, तो फिर आपको ये पाकिस्तानी इलाके में, जैसे ना ईस्ट इंड सुपर मार्केट है, सर्च करें ईस्ट इंड सुपर मार्केट, पूरी पट्टी पाकिस्तानी. आप वहां उतरेंगे, अब बोलेंगे यार तो मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, यहाँ पे सब पंजाबी में कोई बात कर रहा होगा, कोई पश्तो में बात कर रहा होगा, कोई उर्दू में बात कर रहा होगा, राइट? सो गो देयर एंड यू कैन गेट एवरीथिंग. यस, देखिए इनिशियली देयर इज अ बिग शॉक. मैंने यहाँ लिखा है, ऊपर नेम यहाँ लिखे हुए सुफियान, देयर रिटन नेम्स एलडी, टेस्को ऑन द वेब, on the रहमतुल्लाह भाई, आपकी slides are not moving. It's just Okay. stuck on one slide. आप उसको slide show पे डाल के, if you can go to the right slide, please. Okay, I think this is now fine. जी, आप move किया. Now it's moving. Yes. Okay. Thank you. Okay. Sorry. Yes. Yeah, I think that's fine now. I think. Yes. So these are the names that you can see. I'm sorry, the slides are not moving. So ये slide miss हुई थी हमारी बस, and this was the slide. I can share the slide, nothing to worry, right? East and West supermarket, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा. देखिए, cost will be a bit different from Pakistan, but overall, अभी बता रहा हूँ, I'm speaking today when I got for shopping, some things are cheaper. यहाँ पे दूध सस्ता है, स्लाइस सस्ती है. So don't compare. पहले शॉक लगता है. I understand, शॉक होता है कि यार शान मसाला 0.8 pound, 0.8p का, right? सिर्फ ये स्लाइड मिस हुई है. That's it. Yeah, this is the slide, this is the slide, and that's it. That's what 2 slides miss, so don't worry, inshallah. So you'll say, oh yaar, shan masala 89p ka. So ये 89p भी कुछ चीज होती है. 89p का मतलब होता है 89 pence, right? So don't worry about that. Sorry, Rahmatullah, after this presentation, you can share this presentation in our WhatsApp group as well. Yes, so I'll do that. Document bhi aa jayega, so guys, don't worry about it. Yes. Just listen to him. Thank you. So, okay, so that's about it. Now, so मैंने नीचे ASDA लिखा हुआ है. ASDA, खास तौर पे ASDA का जॉर्ज, मैंने यहाँ पे इसकी सिर्फ एक वजह लिखी है, क्योंकि इसकी सिर्फ वजह ये है कि बहुत से दोस्तों ने कहा था कि यार सर्दियों के कपड़े और क्या करना चाहिए, और अली भाई ने हेल्प की इस बारे में. You know, the cheapest, मुझे 2 साल अभी अल्हम्दुलिल्लाह होने को हैं, the cheapest I could see the warm clothes are George ASDA. You can simply go to George ASDA. There's the biggest one is near Good Hope के इलाके में, and it's a massive supermarket. पूरा पाकिस्तानी इलाका, पूरे सब तकरीबन काम करने वाले पाकिस्तानी होंगे वहां पे, आपको नजर आएंगे. And you can pay as cash on the counter जब तक कार्ड नहीं बना. And you can find the largest range of warm clothes, clothes for yourself over there. Even for yourself, for your little ones, because आप पाकिस्तान से जितने भी गर्म कपड़े लेके आए ना, यहाँ की सर्दी के लिए बर्दाश्त में नहीं होते, क्योंकि यहाँ सर्दी, और यहाँ की सर्दी के साथ बारिश भी होती है. यहाँ पे ऐसा भी होता है, मुझे याद पड़ता है, मैं बाहर निकला, धूप हो रही है, और धूप के साथ ओलाबारी समझते हैं, छोटे छोटे ओले जो गिरते हैं, जालाबारी से उर्दू में कहते हैं. So it started raining cats and dogs, and then you had जो small pieces of ice, and I was like, excuse me, what's happening? धूप भी है और धूप के साथ साथ बारिश भी हो रही है, right? So the weather is never predictable over here. So therefore you have to wear something at almost time which covers for rain, which covers for wind, which covers for winter and cold. So that's how you have to dress yourself, and you can get everything over here very reasonable. A good coat will cost you around 25 pounds. 5,000 rupees when you cannot get this thing in Pakistan as well, which covers for all 3 weathers. So it says made for the great weather of Great Birmingham, Great Britain, right? So that's about your dress. सही, तो ये चीजें खाने के बारे में हो गई. Don't worry, चावल वगैरह सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा. Nothing to worry at all. Yeah. Now moving forward. Okay, house. So with regards to house, so those who are looking for active house, so these are 2. मैंने यहाँ पे 2 वेबसाइट्स के नाम लिखा है, Rightmove and Zoopla, जिसपे आप अपना पोस्टल कोड डालें. अब आपकी प्रेफरेंस है आपको किस तरह रहना है. अगर आपको अस्पताल के करीब रहना है, आप अपने अस्पताल का पोस्टल कोड डालिए.
और इसके 2 माइल के विद इन सर्कमफ्रेंस में घर ढूंढना शुरू कीजिए, राइट मूव इन Zoopla एंड चूज योर प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली, राइट। लेकिन एज आई से, ऑलवेज विजिट द प्लेस, चेक फॉर एनी डैम्स। यहाँ पर डैम का बहुत बड़ा मसला होता है क्योंकि सर्दी मौसम होता है ना, तो अगर घर अच्छी तरह नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आपको मोल्ड मिलेगा, मोल्ड, फंगस, और जिनको एस्थमा होता है वो इश्यूज एक्सासिबेट होते हैं, तो लुक फॉर दैट। एंड वेरी सिंपल साइंस, लुक इन द कॉर्नर्स ऑफ द हाउस, लुक इफ यू कैन सी एनी दीवार को हाथ रखेंगे आपको फील हो जाएगा दीवार ठंडी है, गर्म है। यहाँ पे दीवार अगर गीली हो रही है इसका मतलब यहाँ पे डैम्प है, उन्होंने सिर्फ पेंट से उसको छुपाया हुआ है, ठीक है ना। दीवार कभी भी गीली नहीं होनी चाहिए, दीवार शुड बी dry, right? But if you're touching the wall and the wall is wet, that means there's something going wrong, right? There's something going wrong, and therefore you need to be careful about that. Moving forward, rent. Yes, rent की policy यहाँ पे ये होती है कि जो rent पे जा रहे हैं, because most of you will be going on rent, right? You cannot go for any other option because of the Tier 5 visa. So when you go for rent, there's a policy that you have to pay around 6 weeks upfront, and then you have to pay per monthly rents. अभी rents तकरीबन जो घरों के हिसाब से चल रहा है, depending on your house, it varies from anywhere between 700 to 1,000 pounds, depending on what sort of house you want. और फिर हर फैमिली के हिसाब से होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैमिली ऑफ 3 हैं, आप, आपकी वाइफ एंड अ किड, सो यू विल नीड एटलीस्ट 2 बेडरूम, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि अभी पाकिस्तान में हमने क्या, चलो भाई अम्मी अब्बू बेड पे सोने, बच्चे को बिस्तर नीचे बिछा दिया, बच्चे को वहां सुला दिया। यू कांट डू दैट, they will not allow, they will say no, this is not this, I mean you need 2 bedrooms, the child has to sleep in a separate bedroom. Yes, it doesn't happen, that's your thing, but as per rules, so if, for example, if I have 3 kids, I need to have a 4 bedroom house, every room for a separate kid, right? That's why so you have to look for a house in that way. With the rent, you have to add BCC tax. BCC is Birmingham City Council, and therefore you have to pay their tax, जो कि तकरीबन depending on your area 120 से लेके 130 150 पाउंड पर मंथ जाता है। ये मेरा मशवरा है, I don't know it's getting recorded, लेकिन just as advice, try to avoid housing in the जो हार्टलैंड्स का बिल्कुल मुत्तसिल इलाका है ना, जो हार्टलैंड्स में जो काम करेंगे बिल्कुल मुत्तसिल, try to avoid there, क्योंकि वहां पे क्राइम रेट ज्यादा है, ठीक है ना। सिर्फ इशारा दे सकता हूँ, बट यू कैन सर्च क्राइम रेट्स कौन से इलाके में ज्यादा है, तो क्योंकि एंड इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सेइंग इट ऑन दैट द प्लेसेस दैट आर पॉपुलेटेड बाय अस अनफॉर्चुनेटली हैव द हाईएस्ट क्राइम रेट, व्हिच इज रियली सैड, कि जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी हजरात और जो मतलब वहाँ पे क्राइम रेट थोड़ा ज्यादा होता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू कैन सर्च गूगल के ऊपर क्राइम रेट कौन से एरिया में, तो उस इलाके में आसपास में प्लीज अवॉइड। एंड आई एम हैप्पी, मेरा नंबर ग्रुप में सबके पास है, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड। अगर कभी कोई बात आपको पूछनी हो तो मुझे आप, यू कैन मैसेज मी इन द ग्रुप और पर्सनली, इंशाल्लाह ताला द मोमेंट इफ आई एम नॉट ऑन कॉल आई कैन रिस्पॉन्ड बैक कि भाई ये मशवरा है कि इस इलाके में है या नहीं है, ठीक। सिमिलरली इलेक्ट्रिक गैस बिल्स अराउंड 200-300 पाउंड्स, गो फॉर द ऑप्शन, द कंपनी दैट कवर्स बोथ, जो दोनों चीज आपको प्रोवाइड करे एक साथ। एंड प्लीज जब घर देखें तो गैस हीटिंग देखें। हमारा एक दोस्त है बेचारा, उसने इलेक्ट्रिक हीटिंग पे घर लिया, उसको महीने का 400 पाउंड सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में देना पड़ता था, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट। गैस इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, बट इलेक्ट्रिक हीटिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। गैस हीटिंग विल बी 100, 120, 130, maximum 150 a month, right? But electric heating is very expensive, so always go for a house which is gas heated, right? So accommodation के बारे में ये, कोई और सवाल किसी का accommodation के बारे में हो, you can write in the chat and I will try to address that. Now, once you have the accommodation, comes the next question about good, yes, you can. Is it possible to? Yes. So when I came in, I did not have debit card, so cash. तो मैंने जब अपफ्रंट पेमेंट की थी, जिस भी कंपनी लेटिंग एजेंसी है, आपने जब राइट मूव पे देखा ना, तो राइट मूव या Zoopla आपको लेटिंग एजेंसी से राब्ता कराएंगे। आप लेटिंग एजेंसी फोन करें और उनके पास जाएं, प्लीज यहाँ पे रखें। इसलिए मैं कहूँ यहाँ पे पूरी दुनिया फोन बहुत चलती है, आपको बार बार फोन करना पड़ेगा। आप उनके पास जाएं, अब जाएं उनके पास बैठें कि भाई मुझे ये घर ढूंढ के दें, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, उनका भी फायदा होता है। और वो जो है ना, अपना क्या नाम है, आपको बिल्कुल आप उस पर कर सकते हैं, आप पेमेंट पे कर सकते हैं, आप उसके ऊपर जो है ना, आप अपनी पेमेंट बोले मैं कैश पेमेंट करूंगा, कोई मसला नहीं होगा। आपको कैश पेमेंट पे आप पहले 6 मंथ्स की, पहले 6 वीक्स की देंगे डिपॉजिट, और पहले महीने के देंगे, और पहले महीने बाद आपका बैंक बन जाएगा, मैं उस पर आऊंगा, आपका उस वक्त डेबिट कार्ड आ जाएगा। Apartments and buildings, I'm sorry, Dr. Rifat, I can't do that, but if you look for it, it will help you. It's a bit of a tricky thing. I haven't worked in Heartlands, but I know that area is a bit tricky.
that area is a bit tricky, so try to be a bit careful. Yeah. Okay, next. Can you see my slides now? Yes, moving. जी रहमतुल्लाह भाई, आपको मैं 1 मिनट की ब्रेक देता हूँ. You are speaking continuously. Just to make 1 or 2 points about the accommodation. जो मतलब हमारा previous experience ये है, people when they come from a different country, they normally get, for example, a hotel, you know, bed and breakfast or any kind of hotel, because you want to come in and smoothly land at a place. If you have a family member, then things are very easy, because then that is your base for first 1 week or something. And while sitting there, then you can obviously start your search. You know, unless you have a hospital accommodation where you can, you know, they can give you everything, and you can obviously just land directly in your place wherever you're going. I will not obviously worry too much about the crime rate. Generally speaking, UK is an extremely safe country. You know, it's not rampant like some other countries where there is gun crime and so on. There are no guns available. Nobody can buy a gun here. Only you can smuggle or something, which is extremely rare. So please don't get too much worried about crime. However, obviously living here, we are always, we pay attention to it, but I won't scare people that you need to, you know, take it that seriously. However, as Ramtullah Bhai has said, this information is public information as well. If you search just postcode wise, you can just search crime rate in this postcode, and it will tell you how many incidents happened in an area, which are usually of minor nature. Somebody just broke a window, took something, or, you know, stealing some simple things, nothing major. It's not a murder or something, but all that kind of information is public information, which can be easily accessed. My advice will be, wherever you are buying a house, go and have a feel of the area, you know, because when you visit that place, look at things, you know, cleanliness. Generally, everywhere is very clean, but if you go to a place which is deserted, broken windows around the in the other houses, the roads are shattered. Obviously, you don't feel comfortable in that kind of environment, and but obviously this is something what we strongly advise, that you go have a feel, do the research, do your groundwork before you commit to living there for a few months or whatever contract you're going to sign. Thank you. Okay, sorry to interrupt. I will leave the meeting because हम जो पाकिस्तानी gang है, we are traveling from London Euston to Birmingham New Street. रहमतुल्लाह आपके city में we are coming. और वहाँ टीपू सुल्तान कोई hotel है, we are going to visit there. So inshallah, I see you guys in the next session. Or so bye bye from my side. Thank you. Thank you, Levi. Thanks. Yes, I agree with Dr. Abdul Hafiz completely. And yes, Dr. Maruf, you can book Airbnb. So if you're coming with family, you might have to book Airbnb, but Airbnb is a bit expensive. और Airbnb book करने का भी तरीका यही होगा कि आप ऐसी family देखें. Don't look for the Airbnb. What is Airbnb? कि मेरा घर है, मेरे घर में ऊपर 2 कमरे खाली, मैं दोनों कमरों को रेंट पे चढ़ा देता हूँ, ठीक है ना? तो अगर मैं family के साथ हूँ, अगर मैं family के साथ हूँ और आप फैमिली के साथ अगर मैं Airbnb में शेयर कर रहा हूं तो कोई मसला नहीं. और Airbnb सेफ, आपको देखना पड़ेगा उसमें कि वो सेफ है, लेकिन वो एक कल्चरल डिफरेंस के ऐसे मसाइल ना हो, मैं इसलिए कह रहा हूं. बट Airbnb इज एक्सपेंसिव, मतलब एक दिन का तकरीबन 30 से 40 चार्ज करते हैं, तो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. बट यस, दैट्स द ओनली ऑप्शन. दैट्स द चीपर ऑप्शन देन होटल्स. यू कैन गो फॉर yes, don't worry, Vikas, they provide you with kitchen facilities, don't worry, but you have to use your own utensils. They give you kitchen facility, but you have to get your own utensils, which are easily available. जो मैंने लिखा है, they're easily available at George as the so basic stuff, frying pan वगैरह आपको अपना use करना होता है, which is perfectly fine. Yeah. Now moving forward, after house, I think our time is about 20 minutes रहेगा. मैंने question answer भी साथ ही हो रहे हैं. Now after house comes your transport. So transport के लिए याद रखिएगा, if you're traveling with family, my first line says car. If you're traveling with family and kids, that's the cheapest option. लेकिन अगर आप single हैं तो फिर bus, if you can run and walk, perfectly fine. हम 2 साल मेरे दोस्तों ने गुजारे जिन्होंने बगैर किसी चीज के गुजारे सिर्फ बस में, because they were single. There were no issue. They could walk to the hospital. They could go by bus to the hospital. That's fine, right?
Now, how to look for a car? It's a big trade over here, because very careful. You have to be very careful. So I've written something over here. You can go through the slides में लिखा है Auto Trader, Facebook, Marketplace, Gumtree. These are all apps जिसमें आप ढूंढ सकते हैं कि कोई गाड़ी अवेलेबल है नहीं है, लेकिन उसमें चंद चीजें मैंने लिखी हैं, चेक कीजिएगा। उसका MOT कब हुआ है? MOT एक सर्टिफिकेट होता है जिसके मुताबिक गाड़ी चलाई जा सकती है, नहीं चलाई जा सकती, उसमें क्या मसले थे। लास्ट MOT एक चेक होता है, समझे, एक ईयरली हेल्थ चेकअप ऑफ द कार, राइट। उसमें देखें उसकी डॉक्टर साहब ने क्या क्या बीमारियां उसकी तशखीस की थी, उसका इलाज क्या हुआ था, सब कुछ आ जाता है गवर्नमेंट वेबसाइट पे जब आप उसका नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन प्लेट डालेंगे, ठीक। साथ में ये देखिएगा कि बर्मिंघम जो है क्लीन एयर हो चुका है बर्मिंघम के अंदर। अगर आप क्लीन एयर के एरिया से गुजरते हैं, दे चार्ज यू 8 पाउंड्स। तो आपने गाड़ी डीजल वाली ले ली, और आपको फॉर एग्जांपल हार्टलैंड से अगर आपको क्यूई आना है, तो आप गुजरेंगे उस बर्मिंघम क्लीन एयर एरिया से, तो जो बर्मिंघम सिटी में आप जाएंगे तो यू हैव टू पे 8 पाउंड्स फॉर 24 आवर्स, वेरी एक्सपेंसिव। सो चेक दी, वो भी आप वेबसाइट पे लिखेंगे बर्मिंघम क्लीन एयर, आप गाड़ी का नंबर डालेंगे और पता चलेगा वो गाड़ी क्लीन एयर एलिजिबल है या नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट गुजर सकती नहीं गुजर सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गाड़ी खरीदने से पहले उसकी इंश्योरेंस देखें। गाड़ी सस्ती होती है, इंश्योरेंस बहुत महंगी होती है। मतलब हमारे दोस्त ने गाड़ी 2000 के लिए इंश्योरेंस उसको पड़ी 1500। और इंश्योरेंस याद रखिएगा, इंश्योरेंस डिपेंड्स ऑन योर ओन डिटेल्स, व्हाट योर वेयर यू लिविंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज they calculate the insurance as per the area, right? So once you get a house, then you can think of buying a car and putting all your details truthfully. Please put your details truthfully. झूठ लिखेंगे बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इस मुल्क में झूठ नहीं चलता और झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। So never use any wrong details for your filling your car insurance. Now I haven't mentioned car, बस आपने करना किस तरह, बस को, क्योंकि हमारे पास फिर मैंने जैसे कहा ना, बस आपको उसी दिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रैवल करना होगा, BRP कलेक्ट करने के लिए जाना होगा, सब कुछ करना होगा, घर देखने जा रहे होंगे आप, लेफ्ट राइट स्ट्रेट। तो बस के लिए, क्योंकि देखिए टैक्सी वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे टैक्सीज होती हैं जिसमें आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, उसका नाम ABC टैक्सी है, इस तरह की टैक्सी होती है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत एक्सपेंसिव। थोड़ा सा ट्रैवल के 4-5 पाउंड देने पड़ेंगे आपको। तो ये नेशनल बस एक्सप्रेस होती है जिसका कार्ड बनता है, बस कार्ड, इट्स नॉट बस कार बट बस कार्ड फॉर 1 मंथ इज अराउंड 65 पाउंड्स अ मंथ। जो पहला कार्ड है ना, आपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से बनाना है, बिकॉज अगेन आपके पास कार्ड नहीं है, आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो आप डेबिट कार्ड पे नहीं बना सकते, राइट। आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते उस कार्ड की, तो आपने फिजिकल कार्ड बनाना होगा। उसका तरीका ये कि आप जो भी आपके पास पोस्ट ऑफिस है, आप वहां पैदल चले जाएं पहले दिन, जिस दिन पहला वर्किंग डे होगा, आप गूगल मैप पे सर्च करें कि व्हाट इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, वॉकिंग डिस्टेंस कितना है जहां पे आपका कार्ड बनता है, और उनको एक बार कॉल कर लें कि यार डू यू मेक नेशनल एक्सप्रेस बस कार्ड, दे से यस वी डू मेक इट। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा आपके पोस्टल कोड के पास कौन सा पोस्ट ऑफिस है जो बनाता है, लेकिन गिव देम अ कॉल, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू गिव देम अ कॉल बिफोर गोइंग देयर। द मोमेंट यू रीच देयर, टेक अ पिक्चर अलोंग विथ यू, अपने साथ एक पिक्चर लेके जाएगा, वरना वो कहेगा यहीं से पिक्चर खिंचवाओ, जो कि 5 पाउंड की खिंचेंगी आपकी, ठीक है। तो आपने वहीं से पिक्चर ली, और मैं पिक्चर ली और आपने अपना कार्ड बनवा लिया, वो आपको एक कार्ड बना के दे देंगे, बिल्कुल प्रॉपर कार्ड होगा, फ्लिप कार्ड, जो आप उधर दिखा सकते हैं। बस में चढ़ते वक्त आपको दिखाना पड़ेगा मेरा बस कार्ड ये है, ठीक है। तो वो पूरे 65 पाउंड का पूरे महीने का बन जाएगा आपका, एंड देन यू कैन यूज योर कंप्लीटली your brain is free of now traveling, because बस का सिस्टम बर्मिंघम में अमेजिंग है, हर कोने में, हर नुक्कड़ में बस जाती है। So you're now relaxed, you have a card, you can travel anywhere and anywhere now. So and get this the next day possible, just get your bus card made. If someone has got a car for you, that's a beautiful thing. If you don't, you need to get it, and then plan to collect your BRP. You will have a date to collect your BRP, you have to go. Those with family members, you need to check whether your BRP is being sent together, so you'll have to check with the post office when you go there, and then there are specific rules to collect BRPs, right? Yeah, don't worry. So any bus going from Good Hope to QE, yes, there is. You search the moment जब आप Google Map के ऊपर जब आप डालते हैं ना अपना, आप डालेंगे Good Hope Hospital to QE, तो वो आपको ऑप्शन देगा ट्रैवलिंग के, ऑप्शन देगा ट्रैवलिंग, आप बस चूज करेंगे तो आपको बता देगा नेशनल बस एक्सप्रेस कौन सी बस गुजर रही है और किस टाइम पे गुजरेगी और कौन से बस स्टॉप से गुजरेगी। यहाँ पे हर नुक्कड़ पे एक बस स्टॉप होगा, आपने उस बस स्टॉप पे जाना, उस बस स्टॉप पे आपने देखना है यहाँ पे वो नंबर लिखा होगा बस का, फॉर एग्जांपल बस नंबर 76, तो 76 जा रही है यहाँ से, और आप गूगल मैप पे देखेंगे, आपको अपने आप को अकोमोडेट, अपने आप को थोड़ा ओरिएंट करना पड़ेगा, गूगल मैप को थोड़ा इलाज करके देखेंगे ना कि भाई बस किस रास्ते से जा रही है, क्योंकि ये ना हो कि आप गलत रूट पे, बेइज्जत हुआ है, मैं गलत रूट पे बैठा हूँ तो मैं क्यूई जाने के बजाय मैं क्यूई से और ऑपोजिट चला गया,
क्योंकि नया नया आया था, मुझे अंदाजा नहीं था कि सामने बस स्टॉप था और यहाँ भी बस स्टॉप था, दोनों आप आमने सामने बस स्टॉप थे, राइट? Dear Naveed, I'm about what do you call Dudley? I'm not aware of Dudley, but I think these are the same rules which are followed because this is West Midlands, and this National Express is used for Dudley as well. They have it's Dudley also comes in the same county, so it's almost same rules, right? So then you have to be very clear which bus I'm sitting, which bus stop I'm standing, right, and which bus am I taking. So 76 यहाँ भी लिखा होगा, 76 सामने भी लिखा होगा, लेकिन दोनों बस स्टॉप का नाम डिफरेंट होगा. इस बस स्टॉप का नाम किंग्स हीथ होगा, उस बस स्टॉप का नाम क्यूई होगा. मैं क्यूई जा रहा हूं, तो मैंने क्यूई वाले बस स्टॉप पे खड़े होकर बस नंबर 76 में बैठना है. जब बस आएगी मैंने बस को हाथ देना है. बाज दफा बस वाले नहीं देखते, रात होती है, हाथ देंगे, बस रुकेगी, आप चढ़े, उसको कार्ड दिखाएगा अपना, मैंने पेमेंट कार्ड, और फिर बैठ, उसको बताने की जरूरत नहीं है मैंने कहाँ उतरना है, वो फिर आप जाने. यस, अब आप जब बस में बैठे हैं ना, तो आपने अपना मोबाइल ऐप सामने रखना है और आपने वो जो गूगल मैप्स है उसको फॉलो करना है. तो गूगल मैप्स आपको बताएगा ये स्टॉप आ रहा है, ये स्टॉप आ रहा है, ये स्टॉप आ रहा है, एंड यू फॉलो द स्टॉप्स एंड दे विल लेट यू नो द मोमेंट जो स्टॉप से पहले आपको उतरना है. आपने घंटी बजानी है, हर जगह लगा होगा, उससे पहले आपको बस वहीं पर उतारेगी और वहां पे आप उतर जाएंगे, एंड देन यू गेट यूज्ड टू द वे ऑफ कमिंग एंड गोइंग, राइट? लेकिन याद रखिएगा, जो बच्चा जो भी बस के साथ ट्रैवल करना चाहेगा, टेक टाइम आउट, बिकॉज बस की अपनी टाइमिंग होती है और बाज़ बस देर भी हो जाती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे क्यूई में शुरू में जाना 7:30 रिपोर्ट करना होता था, तो मुझे 6:30 बजे निकलना पड़ता था घर से बस के लिए, जबकि रास्ता 20 मिनट का था बस. मुझे पता था 6:50 की बस मुझसे मिस हो सकती है, राइट? सो बी वेरी केयरफुल which bus you're taking, right? And the timing for the bus. Moving forward, our time is limited now. Or before orientation week, there was a question in the group about बच्चों की education के बारे में. So the first and foremost is you need to, the area you're living in, the house, you have to see the schools around. So government schools, remember the government schools are free of cost, and go for government schools. They have very good education. Go for them school, the state schools. क्योंकि private schools बहुत महंगे हैं, वो हम में से कोई भी I don't think so afford कर सकता है. So go for the private government schools. They are standard of care और सब लोग उसी में जाते हैं. Look which school is the closest, and then go and talk to the headmaster or headmistress there. Right? Call them and say we have moved recently. Very helpful people. Go and tell them that we have moved recently, and I want to admit my child. Go and speak to the headmistress. They will give you a form. Fill the form, and you have to wait. You'll have to wait. चीजें क्योंकि वहाँ पे accommodate, क्योंकि हर चीज government के ऊपर होती है. So they have to make an accommodation for you. So they have to make some space for the child, right? That is for the school. It takes time. So I remember one of my colleague who had to wait for around 12 weeks for the child to getting a school. But that's fine. That's fine. Don't worry. They won't miss on things. They will be able to catch up. Secondly, for the baby daycare, daycare facility भी आप अपने घर के पास ढूंढेंगे कि आपके घर के पास कौन सी daycare है, आपको आराम से पता चल जाएगी. Here's the tricky point. I did not go for daycare or something. I did not go for daycare, Dr. Maruk. So I'll let you. So daycare. So anyone less than 3 years goes to a nursery, and for nursery, I'll cover both these options. So for daycare, you have to go for near school. There are daycare facilities available in hospital, but international trainee fellows are not eligible for it. Okay, they're not eligible for the services at hospital because of our honorary, our contract is different. We are not a normal NHS staff, we are an honorary staff, so therefore you could not avail the daycare service available at the hospital, but you can avail the daycare services in your area. लेकिन the point over here to understand is हमारे BRP पे लिखा होता है कि you cannot use public funds because of Tier 5 पे आ रहे हैं, but I verified from another doctor जिनकी बेटी थी कि आपको जो है ना first 25 hours 20-25 hours free मिलते हैं. तो जिस नर्सरी में भी आप जाएंगे, जिस नर्सरी में भी जाएंगे, यहाँ पे नर्सरी कहते हैं उसे, नर्सरी कहते हैं डे केयर की जगह, नर्सरी में जाएंगे तो आपको पहले 20 से 25 आवर फ्री मिलने चाहिए. तो you will have to plan this with your husband in such a way that your work is not affected, or then you can pay as well after that. तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या करते हैं. So depend, minimum and maximum age depends on again the nursery. Just nursery में आप हैं, maximum is 3 years, 3 to 3.5 years, and then you can go in. And one more thing, Dr. Praveen, you need to go and speak to them and see how the nursery is again, because some nurseries might not be in a good state. So you need to go and see, because you need to go and see which nursery you're putting your child, right? So there's a lot of baseline work, but then remember, आपके 25 घंटे
जो 25 घंटे होंगे पूरे हफ्ते के, they are free. You don't have to pay for it. You don't have to pay for it, right? But after that, you might have to pay. You might have to pay. Moving forward. Rahmat bhai, एक second. There are 2-3 points which I would like to just highlight. Number one is regarding the car insurance. When we get car insurance in UK, one of the questions which is asked is, do you have any no claim bonus? Exactly. Yeah. No claim bonus mean that you have been driving a car for a number of years and you did not have any accident. Okay. And some doctors, obviously, who come from Pakistan, obviously within UK, this is a national database which is accessible. Every accident is locked and insurance companies can see if you were involved in any accident in the past 1 year, they go up to 5 years. But if you have not been involved in an accident, then your insurance go down. So if you say, I have not been involved in an accident for last 5 years, then your insurance will be significantly lower if you say, I don't have any certificate. And I've seen some of my colleagues here, they got certificates from Pakistan, from someone, an insurance company. We know there's no insurance system as robust in Pakistan, but any kind of a letter, if you can get it before coming to UK, that will give you a discount, a significant discount. Rather than paying in thousands, you may be paying in hundreds. If you say, I've not been involved in an accident for past 5 years and you never claimed, number one. And number two point was regarding obviously when you are looking, will say, for example, number 74, and then it will say the destination it is going, and that tells us in which direction the bus is going. And from the Google map, you can easily figure out, that you're not sitting in a bus number 74, but going in the opposite direction from where you should be actually going. So, and it's quite easy. You put your postcode on Google, and it gives you the direct option of maps. You click on maps, and then it gives you the option of direction, and then you can say from where to where. It's quite easy going that way. Regarding the school children, there is a central, again, system, which is a monitoring system. We call it Ofsted, OFSTED, Ofsted. So every school has been monitored on an annual basis in terms of their performance. And Ofsted have their own website, as well as council has the names, whichever area you go, council, there is a local education authority section where you have the list of all the schools and their ranking. Is it an outstanding school, or it's a good school, or this needs improvement? So any school which needs improvement, obviously we don't go for that. Anything which is good or excellent, obviously we choose one of those schools. And a lot of times when we are applying for our children, we actually send our application to the council, and then council can search, because all schools are under them. They will produce a list of schools where there is a space available, because some schools might be full. So there may be a school very close to your house or where you're living, but if there is no space, they will provide you a report. This school is full, but you can choose between this, and then you can go to Ofsted and look at the ranking. And then similarly, nurseries are also ranked and looked at. Thank you. Thank you, Doctor. These very important points. Now, moving forward, I think we just have 4 minutes left. So let's move forward. I think the meeting will end automatically at 1 p.m. Dr. Abdul-Hafiz, am I correct? No, it will continue. No, it will not stop. Oh, that's great. Then that's fine. I thought automatically close. No, it will not. Yeah. So now orientation weeks, moving forward. Now coming to the orientation week. So I think that was it. And then, yeah. Now orientation week is very important. Utilize it very well. Try to understand the concepts they are giving you. So if, for example, you will just relax, you're looking for your home, timing बहुत relax होती है इसमें, सुबह 9 बजे आना है, फिर 2 बजे छुट्टी हो जाती है. लेकिन जब भी ओरिएंटेशन वीक पे जा रहे होंगे ना, खाना साथ लेके जाइएगा, please, because मसला है कि yes, you can get some vegetarian options in the hospitals, but the problem is they're expensive. And I'm saying it, you're aiming to save as well, right? And we should be frank about it. There's nothing to be ashamed about it. You'll be saving as well, right? अब अगर आप एक मील आपको वहाँ पे 4 पाउंड का पड़ा, 4 पाउंड के तो मतलब आप 4 पाउंड में तो अच्छी खासी आपको एक हलाल मुर्गी मिल जाती है, जो कि मतलब आप चला सकते हैं, 2 मतलब you know what I mean.
So what I mean is just plan accordingly. So अपना घर से खाना बना के जाएं, घर से सैंडविच बना के जाएं. जब भी ओरिएंटेशन से पहले आपका रोजाना आप दोस्त अपने जब भी जाए ना अपने सैंडविच बना के ले जाएं. चाय वगैरह की टेंशन नहीं, चाय वगैरह हर हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट, चाय कॉफी बिस्किट्स हर चीज फ्री, ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं. So you can easily use that over there. But use your own, take your own food when you're going for orientation weeks. Look for a home during this time, and please sort out your BRP and start looking for a car if you want to. But that's only after you have looked for a home. घर से पहले देखने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको एड्रेस डालना होता है इंश्योरेंस के लिए, जैसे उन्होंने डॉक्टर रफी ने समझाया कि आपको इंश्योरेंस के लिए देखना होता है. एंड गेट यूज्ड टू द एरिया अराउंड. जब आप जिस घर में देखना चाह रहे हैं उस एरिया को देखें. आसपास मतलब फॉर एग्जांपल किसी को मस्जिद देखनी है कि आसपास मस्जिद है कितनी दूर है, किसी को ये देखने का भी आसपास में जीपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जीपी सॉर्ट करेंगे. आपको रजिस्टर विद जीपी. Yes, please register with the GP, your general physician, क्योंकि सारा health system GP से based होता है. तो जो जितना जल्दी हो सके, specifically those with families, again GP में बिल्कुल जैसा हफीज भाई ने फरमाया कि यहाँ पे it's a system which is a national system. So there'll be many GPs around you. Go for the one which is rated good, and you will see which one is better, which one is not. So for example, in my area there are 5 GPs. And they're called GP surgery. Right, GP कहते हैं, surgery कहते हैं, but go to your surgery. तो go to your surgery का मतलब यहाँ पे ये होता है, go to your GP, right? It's called a GP surgery. So go for the GP surgery, which is the best in your area, and you'll have to go there physically, fill forms for yourself, for your children, and then give them some evidence of your accommodation that you're here legally, right? That can be in the form of BRP, that can be in the form of your contract with the house that you're in, because they will need the address. Because GPs एड्रेस पे काम करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर रह रहा हूँ इस एरिया में, तो इस एरिया के मैं इसी एरिया के जीपी के पास जा सकता हूँ, मैं किसी और एरिया के जीपी के पास नहीं जा सकता, इररिस्पेक्टिव वो कितना भी अच्छा हो. तो उसका लोकल एक एरिया है जो गवर्नमेंट उसको दिया हुआ है, वो उसको कवर करेगा, उसको केटर करेगा. तो सो देन देयरफॉर आई नीड टू गो टू द जीपी and get myself registered. And the reason I'm enforcing GPs again and again, because you cannot get anything. अल्लाह ना करे आपको मिसाल के तौर पर आते हैं हल्का फुल्का नजर जुकाम. I'm give an example, right? हर चीज मतलब अल्लाह ताला सबकी फात फरमाए, protect us. But then for example, you need basic health support, so therefore you need to sort your GP as soon as possible. You get a house. Yes, the orientation week is 4 weeks as per the contract of University Hospital Birmingham. So 4 weeks they will orient you. In that orientation week, please understand one thing. Focus on some issues like आपको जो वो एजुकेशन सुपरवाइजर बताएंगे ना कि आपका एजुकेशन सुपरवाइजर कौन है, आपका एजुकेशन सुपरवाइजर कौन है, आपका क्लिनिकल ट्यूटर कौन है, आपको पीडीपीज क्या बनाने हैं. ये 3 वर्ड याद रखिएगा. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ES, CT, clinical. ES is education supervisor, CT is clinical tutor, and PDP is कि जो आपके अपने सेल्फ डेवलपमेंट पॉइंट्स होते हैं कि भाई मैंने पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, मैंने उसके पर्सनल अपना मैंने साल के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं. तो वो जो आपको सिखाएंगे ना, जो ओरिएंटेशन में पूरा बताएंगे आपको किस तरह करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैंने ये किस तरह करना है, मेरा सुपरवाइजर कौन है, मेरा ट्यूटर कौन है, मैंने पीडीपी किस तरह बनाना है. ठीक है. यस, इवन फॉर सीनियर फेलो, फॉर एवरीवन यू हैव टू नीड टू. ये सबके लिए जनरल, ये सबके लिए, इसमें कोई फर्क नहीं है सीनियर जूनियर फेलो में. सीनियर जूनियर फेलो का सिर्फ फर्क होता है जब आप काम शुरू करते हैं, उससे पहले कोई फर्क नहीं होता. यू सिटिंग इन द सेम रूम, यू विद एवरीवन एंड इट विल बी फॉर एवरीवन, राइट. और जो आपका ये एजुकेशन सुपरवाइजर आपको अलॉट होगा ना, आई थिंक समटाइम्स ये फॉरन अपफ्रंट नहीं होता, इट टेक्स टाइम. For some people, you just get a clinical tutor and then they'll try to look for an education supervisor depending on your program, right? So once you get your education supervisor, those who need to get their CPSP sorted, then they can get a form for change of supervisor. वो इंटरनेशनल ऑफिस अकोमोडेट करती है, आपको फॉर्म देगी, आप उस जो CPSP का फॉर्म डाउनलोड करेंगे, आप खुद करेंगे, भरेंगे उसको, आपको साइन करा के देगी, आप सुपरवाइजर साइन करा CPSP में रजिस्टर करा दें. That's not an issue at all. Make new friends, but as I've documented over here, but don't trust anyone, specifically for things like house and car, until you haven't verified yourself. So don't be deceived into anything, right? There are good people around, there are every sort of people around. So be careful and be diligent about who you're meeting and how things are being done around you. So orientation week is just to relax, understand the system. Yes, those working in UHB will be also having the digital system, इनका PICS prescribing system. तो उसका बड़ा एक robust classes होती हैं जो कि आपने अटेंड करनी है. उसमें आपने बड़ा अटेंटिव रहना है कि मैंने किस तरह सिस्टम को यूज करना है.
You get to know the know-how, but once you start going to the shadowing period, that is when you use it. So what is shadowing? तो जो 4 वीक्स ओरिएंटेशन था ना, उसके बाद तो आपने इन 4 वीक्स में एम करना है कि आपने यार अपना घर का मसला हल करना है, जीपी का मसला हल करना है, फैमिली को बुलाना है, ये बिल्कुल रिलैक्स है। और इसी 4 वीक्स में ओरिएंटेशन में मैंने मिस कर दिया, आपने अपना बैंक अकाउंट सॉर्ट करना है। डोंट वरी, द हॉस्पिटल विल गिव यू द डिटेल्स। मोस्ट लाइकली बार्कलेज का बैंक आपको देते हैं, वो बिल्कुल हॉस्पिटल के करीब जो आपका बार्कलेज होगा वहां जाएंगे, वहां पे आपको पूरा पेपर वर्क उन्होंने दिया होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना अपॉइंटमेंट होगा, आप अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, बैंक जो आपका जो बैंक ऑफिसर आपसे मिलेगा, आपको बैंक अकाउंट बना के देगा, उसी वक्त अकाउंट तकरीबन 2-3 दिन में बन जाता है, आपका कार्ड आपके घर पे आ जाएगा, आपके जो भी एड्रेस आपने दिया होगा, एंड यू विल हैव अ डेबिट कार्ड बट विदाउट एनी मनी अंटिल इट इज ट्रांसफर्ड बाय द फर्स्ट सैलरी। यू गेट द फर्स्ट सैलरी आफ्टर अराउंड 4 वीक्स। तो अगर आप मार्च 1 फरवरी को शुरू करें तो 28 फरवरी 29 फरवरी 29 तो नहीं होगा, 28 फरवरी होगा, तो आपको आपकी पे उस अकाउंट में आ जाएगी। एंड नाउ activate your card. One thing that you need to do when you go to the bank, and this is very important, a very good trick that I remember myself, किसने बड़ी हेल्प की, जब आप बार्कलेज अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे ना, तो उसी वक्त आप अपने अकाउंट में अपने मोबाइल में बार्कले का ऐप डाउन, क्योंकि बार्कले ही होता है, मुझे याद पड़ता है, यूएचबी के लिए बार्कले होगा, डेडली के लिए आई डोंट नो, बट देन जिस बैंक में भी जाए उसी वक्त अपने मोबाइल में जो है ना आप उसका ऐप डाउनलोड करके वहीं एक्टिवेट करा दें, क्योंकि यहाँ पे हर चीज मोबाइल ऐप से हो सकती है। आपने उसी वक्त करना है और उसी वक्त आपका मोबाइल जो है ना एक्टिवेट हो जाएगा। कैन वी डिपॉजिट आवर कैश? यस यू कैन डिपॉजिट योर अकाउंट, जितने आपके पैसे आपके पास हैं आप उसको उसी वक्त अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। बिल्कुल जैसे आपका अकाउंट खुल जाए वो आपको प्रोसेस समझा देंगे किस तरह प्रोसेस करना है, मशीन्स भी होती हैं डिपॉजिट करने की, आप उसी वक्त कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। In Heartlands, it is computer-based. In QE, it is computer-based. Good Hope is almost becoming computer-based. Solihull is also computer-based, right? Yeah. So that's about the account. And when you have the account, now one thing I will recommend, जो कहते हैं ना पैसे ट्रांसफर कैसे करने हैं back home, उसके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, yes, you can use TransferWise, you can use Western Union, you can use Remit. These are all companies that you can use online to transfer, but they charge money. For example, अगर आप 1000 pounds भी कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपको तकरीबन 10 pound से 18 pound चार्ज करेगी। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है रोशन डिजिटल अकाउंट, जो कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया पाकिस्तान में। सो व्हेन यू कम हियर, यू कांट अप्लाई ओवर देयर, सो व्हेन यू कम हियर, so you can apply for रोशन डिजिटल अकाउंट, and this is something that you need to do on the same year. जब आपका जो महीना है ना आपको ओरिएंटेशन, जो आप बार्कले खुलवा रहे हैं, जो आप महीने बार्कले का अकाउंट खुलवाएं, तो आप पाकिस्तान में रोशन डिजिटल के लिए भी उसी वक्त अप्लाई कर लें। इट हैज टू बी अ रोशन डिजिटल अकाउंट इन GBP, in Great Britain pounds. Okay, तो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मीजान के साथ रहा, उन्होंने मुझे फौरन खोल के दिया था और विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको सिर्फ उनका कोई फॉर्म सेंड करना होगा, यहाँ की अपनी पेज जो आपको वो स्लिप मिलेगी ना, जो बार्कले वाली मिलेगी, वही आप उनको सेंड कर लीजिएगा, आपको 1 महीने में वो खोल देंगे अकाउंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपका बार्कले ऐप हो जाएगा, आप उससे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं जितने भी करने हो, 5000 10,000 पाउंड भी करने, मिसाल देना चाह रहा हूँ, it will come directly as pound from your Barclay account to Pakistan Mizan Roshan digital account, and it will charge you only £1. Can you imagine? You're sending 5,000 pounds, 5,000 pound किसी भी और कंपनी से करेंगे, आपको कम से कम भी 20 से 25 पाउंड लगेगा, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट £1 सिर्फ चार्ज करेगा, आपके बार्कले अकाउंट से डायरेक्ट मीजान रोशन डिजिटल में आ जाएगा। अब जब रोशन डिजिटल में आ गया मीजान में, उससे आप पाकिस्तान के किसी भी अकाउंट में, किसी भी नॉर्मल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं एट द पाकिस्तानी इंटरबैंक रेट। एंड ट्रस्ट मी, पाकिस्तानी इंटरबैंक रेट इज मच बेटर देन व्हाट रेट वेस्टर्न यूनियन और ट्रांसफरवाइज आर गिविंग यू। इट माइट बी अ बिट अट्रैक्टिव, मिसाल दे रहा हूँ, ट्रांसफरवाइज आपको 240 करेगा, लेकिन जब आप उसको ट्रांजैक्शन करेंगे ना, तो वो आपको तकरीबन 20 पाउंड काट लेगा, तो अच्छा 20 पाउंड तो आपको उसी वक्त कट गए, जबकि आपके वहां 1 पाउंड कटेगा और आपको इंटरबैंक रेट 239 पॉइंट समथिंग मिल रहा होगा। इट इज मच मोर बेनिफिशियल, एंड दिस इज हाउ यू कैन हेल्प पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो बेहतर, बिकॉज दैट्स हाउ इट डिपेंड्स। तो वो होता ही इट्स अ बिट स्लो, यस। ट्रांसफरवाइज में शायद फौरन 5-6 घंटे पैसे आ जाते हैं, यहाँ पे जब बार्कले पैसे विड्रॉ करता है तो स्टेट बैंक के पास जाता है, स्टेट बैंक फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इट्स अ बिट स्लो, लेकिन इट्स मच चीपर एंड इट्स मच बेटर, एंड यू कैन सेव मनी।
and trust me, you can रोशन, आपको 2 साल बाद वापस आना है तो आपको रोशन डिजिटल अकाउंट में आपके पास कुछ ना कुछ पैसे रखे होंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो आपका पैसा है पाकिस्तान के अंदर, वो आप पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं। यस, जब 2 साल बाद वापस जाएंगे तो वो अकाउंट किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसे बाहर से आ सकते हैं। यू कैन ओनली गेट मनी फ्रॉम यूके, from any other country, from outside, not from Pakistan. You cannot deposit anything from inside. Yeah. How much money would be enough for first month expenditure? Depending, Dr. Malik, where you're living. So if you're living in a hospital accommodation, your accommodation is free, right? The grocery and stuff, सब कुछ भी मिला के आपके लिए बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपके लिए 1000 पाउंड भी काफी होता है, बहुत 1000 पाउंड में बहुत कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। ग्रोसरी, बहुत एक्सपेंसिव ग्रोसरी भी आप ले लें, फ्रूट सब कुछ भी कर लें तो आपके 500 से क्रॉस नहीं होती ग्रोसरी यहाँ पे। बहुत एक्सटेंसिव, बहुत लाविश की बात करूँ उस वक्त भी, राइट। और इसके अलावा जो है, दैट्स वन थिंग। सो 1000 is enough. But if you're going for Airbnb or if you're going for a hotel accommodation, that's tricky. That can be, because it depends on the house. So for example, आपने Airbnb बुक करा 1 हफ्ते के लिए, राइट। आपने Airbnb बुक करा 1 हफ्ते के लिए, एंड Airbnb में आपने 1 हफ्ता बुक कराया और हर हफ्ते का 1 महीने दिन का आपका 30 पाउंड ले रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो 30 into 7 is 210. But what if you don't find a house in 7 days? You might have to extend that. So those coming with family, I will advise at least 2000 pounds should be in the pocket. 2000 pounds होने चाहिए, ठीक है। Yes, I don't get the Dr. Fawzia question. I don't get it. Along with, we have to pay for accommodation. I mean, the first month accommodation, if your hospital accommodation is free, after that, yes, you have to pay around 500 pounds a month. Similarly, can you withdraw money in Pakistan? Yes, you can withdraw money in Pakistan from Russian digital account, right? You can withdraw money in, you can do that, or you can transfer to your other account as well. You can transfer to other accounts. जैसे आपका पहला account होगा, उसमें transfer करके withdraw कर लें। Dr. Vakas, what are the options if someone does not know how to cook? This can be done in personal. You can look for someone who can help you in cooking, right? You can try to look for someone who can help you in cooking. Online food is expensive here. It's not like Pakistan, it's expensive. For example, I'll give you an example. अगर आपको, क्योंकि आप यहाँ पे, I mean, no judgments, nothing, but just saying if you're ordering halal food, it's expensive. It's expensive. For example, if you a burger and a sandwich, burger and French fries and a Coke will cost you around 5 to 6 pounds. So 5 to 6 pounds for one meal is expensive. Yes, what you can try is, ये जो LD है, टेस्को है, इनमें एक मील वो होता है, कूपन मील डील होती है, 3 पाउंड का मील होता है, 3 पाउंड का मील होता है, and you can go for that. You can go for that. You can go for that meal coupon. You can go for that meal deal. 3 पाउंड की आपको डील, उसमें आपको सैंडविच चूज करना पड़ेगा, वेजिटेरियन सैंडविच लेना है या कौन सा सैंडविच आपने लेना है, उसमें फिर आपको एक सैंडविच और एक कोल्ड ड्रिंक और एक साथ में एक और छोटा फ्रूट का वो मिल जाता है। बट यू हैव टू लर्न, और डेफिनेटली यू विल मेक फ्रेंड्स एंड दे विल हेल्प यू, यू कैन मेक अप। डोंट वरी, पहली बार थोड़ा बहुत मसाइल होते हैं, but you will learn, don't worry at all. I remember one of my very good friends who was an army, mashallah, who was an army officer when he came here. So he used to have a butler at home, but now he has to learn. So he struggled quite a lot, but in the end he learned how to make a good kadai. So you never know what happens, right? Now moving forward, shadowing. I'm sorry I've taken a lot of time. Shadowing is the most important time in UK, right? Here, what do you mean by shadowing? Shadowing का मतलब है कि आप किसी और डॉक्टर के साथ, अगर आप जूनियर फेलो हैं तो आप SHO के साथ, अगर आप सीनियर फेलो हैं तो रजिस्ट्रार के साथ, आप उसके साथ जो है ना शैडो करेंगे। क्या मतलब? वो जो काम कर रहा है आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। प्लीज, डिपेंड करता है हर डिपार्टमेंट की कितनी है, बाज़ डिपार्टमेंट में 1 महीना है, बाज़ डिपार्टमेंट में 2 में, डिपेंड्स। प्लीज डोंट बी ओवर एंथुसियास्टिक, just observe and be frank and tell them I'm shadowing. Just learn क्या कर रहे हैं, कोई ब्लड ड्रॉ कर रहा है, हाउ डू यू ड्रॉ ब्लड्स, हाउ डू यू फाइंड थिंग्स टू ड्रॉ ब्लड्स, हाउ डू यू पॉट ब्लड्स। पॉटिंग ब्लड मतलब यहाँ पे पॉटिंग मशीन्स होती हैं जिनके जरिए ब्लड रिजल्ट डायरेक्ट लैब में जाता है, वो मशीन का पाथवे होता है उसमें जाता है। हाउ टू पुट कैन्युलास एंड स्टफ, दीस आर बेसिक थिंग्स। एंड याद रखिए ये सीनियर जूनियर दोनों को करनी होती है इन दी एंड। सो डोंट थिंक दैट ओ मैं तो रजिस्ट्रार लेवल पे आ रहा हूँ, मुझे कैन्युला क्या करना पड़ेगा। नहीं, अगर SHO फंसेगा तो वो आपको बुलाएगा, and he will ask you, sir can you please come, there's no server, or Dr. Falan, can you please come and insert cannula for me?
And you can't say, okay, I'm sorry, I did not learn. No. So the shadowing is that time where you learn these things, right? Yes, if you're not comfortable in doing it until that time, you are frank. You can be frank and say, I'm sorry, I don't know how to do it. I'm learning. I don't know how to do it. So it happened, for example, with one of our friends. He was asked to put a Foley's catheter. Shadowing खत्म हुई, on call शुरू हुई, रात को कॉल थी, उसको कहा कभी ये एक कैथेटर करना है आपने, Foley's पास करना है. तो यहाँ पे some nurses can do it, some nurses cannot do it, because it depends whether they are allowed to do it or not, they're trained to do it or not. Now he never do it. He never knew how to do it. He never learned how to put a Foley's catheter because he came from a private hospital. All right. So he now, rather than going and trying and harming a patient, just be frank and say, I'm really sorry, I don't know how to do it. Yes, they will look at you and say, okay, you don't know how to do it. Yes, don't worry, but you can ask for your colleague. There are always people to help. There will be someone in the next ward. Call him and say, sorry, I don't know how to do it. Can you teach me? So you should not, the word I will use over here is, ये मत दिखाएं कि मैं काम शंट कर रहा हूं, बल्कि ये दिखाएं कि यार मैं सीखना चाह रहा हूं, मुझे Foley's करने नहीं आता, यार मुझे सिखा दो, कोई मसला नहीं. I never knew how to put a cannula. I worked in, मैंने आखान में ट्रेनिंग करा था अपना, तो मुझे कभी कैनला डालने का सोचा भी नहीं, कैनला डालेंगे हम लोग, राइट? तो कैनला तो पता भी नहीं कैनला का सी किस तरह शुरू होता है. लेकिन मैंने एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ, मेडिकल स्टूडेंट करता था वहां पे, बहुत ज्यादा मैं कैनला करता था, मैं उसके मैंने क्या किस तरह कर रहे हो, मैंने देखा उसके साथ. फिर एक FY1 जो फर्स्ट ईयर इनका जो इंटर्न होता है उसके साथ मैं गया, मैंने उसका देखा, मैंने किस तरह कर रहे हैं. एंड देन I learned how to do cannulas, and now people would come, yeah, can you put a cannula? And so that's how you do it. So you need to understand. So shadowing में देखना है आपने. Just learn how to do it and show your interest. Don't shunt. ये नहीं करेंगे भाई shadowing चल मैं shunting कर रहा हूँ, मैं बस बैठा हूँ साइड पे, नहीं. Look at the job list. यहाँ पे है, ये अच्छा वर्ड है job list. Job list का यहाँ पे होता है कि मतलब जब राउंड होता है ना, राउंड के बाद एक जॉब लिस्ट बनती है, उसको यहाँ पे जॉब लिस्ट कहते हैं कि भाई ये जॉब्स हैं. उस जॉब्स में ब्लड्स होंगे, उस जॉब्स में फैमिली को कॉल करना होगा, उस जॉब्स में डिस्चार्ज लेटर बनाना होगा, उस जॉब में TTOs का मतलब होता है जो ड्रग्स टू बी सेंट होम, वो बनाना है. तो यू नीड टू सी, ये जॉब लिस्ट है, और इस जॉब लिस्ट में आपने डिवाइड करना है, आपके साथ कोई कुलीग है, मैंने कौन सी जॉब्स करनी है, कौन सी नहीं करनी, ठीक. तो बी अ पार्ट ऑफ द टीम यू वर्किंग फॉर. सेकेंडली, where you can get the scrubs. Every hospital will provide you scrubs. QE के अंदर second floor पे मिलते हैं, Good Hope में भी वहाँ पे मिलते हैं. Everywhere has scrubs of all sizes, and you can, and pink, blue, and green, ये तीन colors होते हैं. I think in UHB, I think pink and blue are the most commonly used, and you just have to wear them. There's nothing, I mean, that's your choice. You can just wear them, or you can also wear your normal clothes that you wear, but you have to be bare below the elbows. That's the mandatory thing. And then you can also sort your CPSP supervisor work in shadowing. Never be over enthusiastic. Never be let down. कभी बिल्कुल पीछे relax होकर ना बैठे. Show your interest and show that you're observing, right? And then take it from there. How long shadowing? Plus, that's what I'm saying. Orientation is 4 weeks. Shadowing depends on your department. For example, internal medicine वालों के लिए 4 हफ्ते ही होता है shadowing until they put you on the on-call rota, right? For others, it's different. So it depends which department you're going to, and they'll make you shadow accordingly. ठीक? Now these are some common terms that you need to understand, जो कि हम लोग को नहीं पता होता. हम लोग, because हमारा social background different है. So when you're observing in shadowing, you need to know what is social history. He lives in a house, flat, nursing home, sheltered accommodation. ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास house ही होता है, right? तो यहाँ पे you need to ask, and you need to be, everyone working at a high level or senior level or junior registrar level, senior fellow, junior fellow, आपको पता होना चाहिए मैंने social history कैसे लेनी है. Very important, because आपका decision उस पे होगा कि भाई इसको discharge करना, लेकिन इसके बाद तो घर ही नहीं है. So then you have to wait for the occupational therapy, physical therapy, and there's other teams. So then you have to go for them. And similarly, smoking, alcohol, and any partner. So now partner is a term that you will come across. So partner means कि भी आप किसी के साथ रह रहे हैं. Who's your partner? Who's your partner? Whether it's your wife or it's your, so because यहाँ पे you can have different partners. You can have a male partner for male partner, a female partner for female partner. So therefore, the term that you use over here is, do you have any partner, and do you live with partner? Yes, and that's how you ask, right? So don't assume that if there's a man sitting in front of me, so he will have a wife, right? He can have a male partner,
right? If there's a female, she can have a female partner. And similarly, don't assume that the person who's walking in the clinic or in the clinic, and there's a person sitting next to him, he is so you have to be very careful. So just use the word partner, because the partner could be a girlfriend, a partner could be a wife, a partner could be so the word used is partner, and you have to be very careful about it, right? And it should not be like some, for example, it happened that two males turn up into AMU, and you go and ask them, who's this, and he says he's the partner. He's like, what? So partner means they're living together in a relationship, right? The second term that you need to understand is collateral history. Sorry, Dr. Ruksai said, when applying for FY2 jobs after PLAB2, should we be asked for a shadowing orientation period? It depends on your hospital who gives you the FY2 jobs. So it depends. Definitely, they will do this. They will always do orientation and shadowing if you're joining for NHS for the first time. So it depends on which hospital you join for FY2 jobs. Yeah. Now, collateral history. ये बहुत बड़ा टर्म है. What's collateral history? क्या मतलब? एक पेशेंट आपके पास आप AMU में है, आप SAU में है, आप कहीं भी है, एक पेशेंट एम्बुलेंस उठा के ले आई, right? और पेशेंट बिल्कुल is unconscious. So you need to take a collateral history. Collateral history का मतलब ये होता है कि I need to call the next of kin and take details. What happened? क्योंकि यहाँ पे social system बहुत different है. The son might not be living with the father, so he will not know. For example, he might not know, but he might have installed cameras in the house to know what's happening. So that's called collateral. When the consultant says कि भाई इसकी collateral history लेनी है, तो इसका मतलब ये कि आपने next of kin को फोन करना है. अगर वो nursing home में है, तो आपको nursing home फोन करना है, पूछना है कि भाई ये patient अभी transfer हुआ था, nursing home में क्या मसला हुआ था, क्यों transfer किया था. So that's collateral history. The other thing is everyone should download this induction app. इंडक्शन आप सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर में, इंडक्शन कहते हैं. यहाँ पे ये कि आप जो हॉस्पिटल चूज करेंगे उसके सारे नंबर्स आ जाएंगे. मुझे अगर फार्मेसी फोन करना उसका नंबर क्या है, तो ये सेंट्रल सिस्टम है यूके का. इंडक्शन ऐप के नाम से इंडक्शन ऐप अभी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के ऊपर. आई थिंक डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर अपने हॉस्पिटल का नाम डालें. भाई मैं जो भी हॉस्पिटल मेरा है, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बर्मिंघम, और फिर उसके अंदर भी स्पेसिफिक हॉस्पिटल कि QHB है, हार्टलैंड्स है, उसके मुताबिक आपको सारे नंबर्स दे देंगे कि भाई ये नंबर है यहाँ के. अगर another term, waterworks. What do you mean by waterworks? Waterworks का क्या मतलब है? मतलब आप होता है पेशेंट आके बोला कि oh my waterworks are problematic. मैंने कहा waterworks? What are waterworks? So waterworks mean by, I mean, so you can understand what I'm saying. It's just about urination. So they use the common term is waterworks. And yes, you will find a bit difficult. Burmese English is a bit heavier. So you'll get used to the accent, the way people speak. But don't assume things. That's one thing. If you're not able to understand what the person is saying, just say, pardon, can you please repeat what you're saying? And they will repeat it for you. And then I hope you'll be able to catch it. So waterworks is for urine. I've mentioned this Waze and Google Maps. ये दो चीजें हैं जो आप use कर सकते हैं for your maps. Yes, take. What is take? So आपको consult कभी go for the medical take. हमारे medical take या take तो हम टेक तो पता नहीं टेक होती है हमें, ये क्या टेक है भाई? तो टेक का मतलब होता है क्लार्किंग लिस्ट. तो टेक इज लाइक अ क्लार्किंग लिस्ट. भाई आपको बोले भाई सर्जिकल, सो इट बेसिकली मेडिकल और सर्जिकल पेशेंट्स कमिंग टू AMU is acute medical unit or surgical assessment unit, surgical acute unit. So that is the list of patients that need to be seen, need to be clocked. So you have to clock them, then discuss with your senior, clock them. And what is PTWR? PTW मतलब post take ward round. तो आपने टेक कर लिया, यानी आपने क्लॉक कर लिया, उसके बाद कंसल्टेंट ने जो पोस्ट राउंड किया उसको कहते हैं PTWR, पोस्ट टेक वार्ड राउंड, right? And when you're working as a shadowing, always know your roles. So if you're working as a junior fellow, you are SHO. When you're working as a senior fellow, you'll be working as a registrar. So they will define your role. So know your role accordingly so that you know your jobs. Okay. और यस, यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि अगर आप शायद पाकिस्तान में, क्योंकि हम जब पाकिस्तान में होते हैं, मेरे को कोई अगर IMM के बाद कोई मेडिकल रेजिडेंट है, वो चौथे साल में था, लेकिन वो यहाँ पे आके SHO की तरह काम करेगा क्योंकि उसने IMM किया है, उसने FCPS नहीं किया. SHO का मतलब है वो FY1 के साथ काम कर रहा होगा. सो डोंट थिंक मैं यार इतना सीनियर था, मैं अब दिस इज योर चॉइस, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग. सो नाउ व्हेन यू कम हियर, यू विल बी वर्किंग विद FY1, दैट इज द इंटर्न, एंड यू बोथ आर वर्किंग द सेम लेवल. सो डोंट बी अशेम्ड, don't be कि भैया मैं तो बहुत नीचे आ गया हूँ. Don't worry, you have to work and don't worry, there are no limits, right? So you just have to work and be part of the team. Moving on, and hope we're finishing soon. Yes, on-call rota. When you start on the on-call rota after the shadowing week, please
please always ask whenever in doubt. Wherever in doubt, don't assume. जहां भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीनियर से पूछें, कोलीग से पूछें. न्यू सिस्टम, people will not look at you. Just don't. अभी भी गलतियां होती हैं, so don't hesitate to ask. Now, for example, मैंने दो बहुत कॉमन चीज लिखी है. ये लिखा होगा VR8, VR3, fixed rate. अभी क्या चीजें हैं? मैंने खुद देखा ये क्या है? What is VR8? What is fixed rate? So, for example, variable rate is basically sliding scale for insulin. तो जो भी हमारे स्लाइडिंग स्केल हम शुरू करते हैं पाकिस्तान में, उसको ये लोग वेरिएबल रेट कहते हैं. और जब हम इंसुलिन इन्फ्यूजन शुरू करते हैं फॉर डीके फॉर एग्जांपल, उसको फिक्स्ड रेट कहते हैं, राइट? एंड इट्स वेरी कॉमन. सर्जिकल पेशेंट आ रहे हैं, बोलेगा यार उसको वेरिएबल रेट पे करो. व्हाट्स वेरिएबल रेट? Sliding scale, because patient not eating and drinking, start on variable rate. So variable rate is sliding scale. You'll get used to that. And then, as I said, always be polite, gentle, and ready to help others. Always be polite, gentle, and ready to help others. Never try to shunt the system. Yes, I think these are the two last pages, last slides. Now, the most important thing is leaves. Plan your leaves accordingly. आपको तकरीबन 28 वर्किंग डेज की लीव्स मिलती हैं, सो प्लान देम अकॉर्डिंगली. एंड याद रखिएगा, आपको सिर्फ 14 मिलेंगी इन फर्स्ट 6 months एंड 14 इन लास्ट 6 months. और ये 14 से मुराद होता है वर्किंग डेज. दे एक्सक्लूड द वीकेंड्स. तो अगर आपने 10 दिन का मतलब होगा मंडे टू ट्यूसडे, मंडे टू फ्राइडे, तो वीक में वीकेंड्स हट जाएंगे. तो अगर आप 15 दिन की छुट्टी लेंगे तो 15 दिन मतलब लगेगा आपके तकरीबन 3 हफ्ते हो जाएंगे पूरे, बिकॉज सैटरडे संडे मिला के करेंगे तो वो 3 हफ्ते बन जाएंगे. तो आप प्लान करें फर्स्ट 6 months में अपनी छुट्टी लेने का. प्लीज डू नॉट वेट फॉर कि मैं फिर जाए आप अपने सुपरवाइजर के पास कि मेरा 1 साल हो गया सर, मुझे पूरी छुट्टियां चाहिए. कोई नहीं देगा आपको, बिकॉज NHS is very has to be very careful with it, right? Sick leaves, yes, you can take sick leaves if you are sick, but always understand someone who's taking sick leaves of 2 days and is taken 6 times in 3 months, you'll be called for a meeting. Right? Taking for longer, so for example, किसी ने 12 दिन को sick हुआ, let's suppose हो सकता है उसको GP लेटर दिखाना पड़ेगा, मैं ये था मेरे साथ मसला. That's fine, that's a one-off. But taking 2 days for 6 times, that's not fine. You'll be called for a meeting. So be careful. Be very, very careful. And one thing, those coming with family, there's no paternity leaves. There are no paternity leaves as per ITF contract. Yes, if you're working on a tier 2 visa, you have paternity leaves, but an ITF contract, you have no paternity leaves. So those who are coming with family, you need to plan accordingly, right? You need to plan your leaves accordingly. Locums, yes, but don't even think of it until you have worked for at least 2 months on the on-call rota. But meanwhile, देखिए आपके 1 हफ्ता हो गया ओरिएंटेशन का, 1 हफ्ता हो गया, सॉरी 1 महीना ओरिएंटेशन का, 1 महीना शैडोइंग का, और तकरीबन 2 महीने आप लगाने अपने ऑन कॉल रोटा के. 4 महीने के अंदर जो लोकम का ग्राउंड लेवल वर्क है ना, वो शुरू कर दें. क्या मतलब? इंटरनेशनल ऑफिस को ईमेल कर दें कि भाई मुझे टेम्परे पर डाल दे. टेम्परे इज अ सॉफ्टवेयर दैट टेल्स यू लोकम कहाँ पे आ रहे हैं. टेम्परे, ठीक है ना? तो आपको जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बर्मिंघम में जितने लोकम्स आएंगे, आपको सिर्फ उसका पता चलेगा, बिकॉज ITF कैन ओनली वर्क फॉर लोकम इन द सेम ट्रस्ट दैट दे हैव हायर्ड फॉर. सो जो डडली में, तो वो सिर्फ डडली का जो ट्रस्ट है सिर्फ उसके लिए काम कर सकता है. उसके जितने हॉस्पिटल्स हैं उस ट्रस्ट के लिए, उसके लिए वो लोकम कर सकता है, उससे अलावा नहीं कर सकता. ठीक है? तो ये 4 महीने में आप इंटरनेशनल ऑफिस से रिक्वेस्ट करें कि मुझे टेम्परे पे अकाउंट डलवा दें, लेकिन ये भी जब आप ऑन कॉल रोटा पे आ जाए तब, राइट? क्योंकि उससे पहले करने का कोई फायदा नहीं है. गेट योर नीनो इज नेशनल इंश्योरेंस नंबर. तो वो आपको जो नीनो है, वो आप उसका एक फॉर्म होता है जो कि जब आएंगे तो HMRC की वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं. जस्ट सर्च नीनो एप्लीकेशन, वो आपको पता चल जाएगा. ये SHO के रेट्स हैं, तकरीबन 40 per hour होता है. SPR is registrar rates 50 to 80 depending on the need. The last line is important. अगर कभी आपको medical workforce, yes, very important. यहाँ पे जो रोटा बनता है ना, यहाँ पे डॉक्टर रोटा नहीं बनाता. There's a medical workforce. There are people hired to make rota, and they have a rota template, right? Yes, a consultant oversees, but it's a fixed rota. It's a fixed rota template following the UK rules that you're not supposed to work more than 48 hours a week. और उसके मुताबिक वो रोटा बनता है. लेकिन अगर आपको मेडिकल वर्कफोर्स कांटेक्ट करती है कि भाई यार हमारे पास ये बंदा नहीं है, कैन यू डू अ लोकम, then you can negotiate with them on that same time. Okay, during work, very important, for every 8 hours shift from 8 AM to 4:30, you're supposed to take 30 minutes break, and you should take it. The consultant you're working will tell you to take it.
If you're working for more than 8 hours, then you should take 1 hour break. Now this 1 hour break depends, you want to take half an hour, or you want to take 1 hour together, right? But then always see the team dynamics. Team dynamics किस तरह चल रहे हैं और किस तरीके से आप उसको आपस में दो कर सकते हैं, set कर सकते हैं. Always remember, work hard, put your best efforts, and you'll be highly appreciated. Learning is very important. कि यहाँ पे learning किस तरह होती है, सब हमेशा पूछते हैं learning किस तरह होगी. यहाँ पे कोई आपको हाथ बिठा के पढ़ाएगा नहीं, हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाएगा. The learning is in words. Just reflect. आपने पेशेंट देखा, आपने क्या प्लान बनाया, उसके बाद कंसल्टेंट ने क्या प्लान बनाया, क्या डिफरेंस था. That's your learning point. No one will hold your hand and teach. No one, because यूके के सिस्टम रूल्स डिफरेंट है. कोई भी आपको, जैसे पाकिस्तान में होते हुए कंसल्टेंट आपको प्यार मोहब्बत से, पाकिस्तानी प्यार मोहब्बत से और पाकिस्तानी खास डंडे अंदाज से समझाता है, बताता है भाई ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं करेगा. वो जाके डॉक्यूमेंट कर लेगा कि भाई ये प्लान है मेरा, and that's it. If you make a big blunder, they might call you and give you a feedback on that. But then this is how you learn. This is how you learn. You learn in words by reflecting on your plan and compare with the plan of the consultant or the senior person, and then take it from there. And that brings the presentation to end. I'm really sorry for taking so long. Any questions? And we'll end over here. Rahmatullah bhai, can you close your screen share? Yes, I'm just ready. Thank you. Yeah, is it done? Thank you. Thank you very much. Excellent presentation. Really thankful. I think that was much detailed. When I came to UK 20 years ago, 22 years ago, we didn't have anyone like this. This is the main aim of an organization like ABS UK, and we continuously hold hand of people, give them information rather than we try and struggle while we are here. Rahmatullah, I think there are a few questions in the chat. If you would like to address them before I give some extra tips at the end when we close. Yeah, so the international driving license, yes, I missed that point. It's valid for 12 months. It's valid for 12 months. And while you start driving, so some insurance companies will not overcharge you because of the international driving license. And we can discuss in like companies like Aviva and stuff like that. They won't overcharge you for international license, and go for those international driving license, right? So no, you need to make an international driving license. You need to have an international driving license. Regular Pakistani license will not work. But then the good thing is, if you go to any international any license office, it will be done in 48 hours or so. So don't worry about it. It doesn't take that much time. There's no test. You just have to do it. But it is valid for 12 months. And within 12 months, you have to register with DVLA. DVLA is the national authority in UK for license. You need to go there. You need to just go online and request a provisional license. Provisional license, it takes around 6 months to get the provisional license. Then you have to apply for theory, and then you have to apply for test to get a definitive license. But it is valid for first year. So try to get a proper license within that first year. Any other question? Right. Gigi, I think we've covered almost all the important areas. Just few last points which I would like to make. Just sharing my experiences of obviously when I worked as a junior doctor within the UK and so on. In terms of annual leave, the clever people, when you start your job, you give a notice. Plan right in the first week, second week, plan your holidays. Reason being, because hospitals do not let number of people go on annual leave at the same time. Only one SHO or one registrar can go, and you have to coordinate with others. And if other people have picked a date, okay, so it's essential, and you have to give enough notice as well. It's not that you ask for you walk away. The annual leave have to be moved, and there are some forms which you have to fill and so on, and get the person covering to have that signed. There are regular teaching sessions every week or every 2 weeks. They will provide you, a timetable where some formal teaching will also take place, some presentations, cases, discussions, and so on. What I would suggest is obviously listen to the nurses. Okay, in Pakistan, relationship between doctors and very different.
UK nurses are very well trained, and they have been working in the same department for a very long time. They might be working there for 20 years, and they may know the names of the medication, doses of the medication, interaction between medication. So their knowledge in that particular specialty might be more than you. Okay, so if they suggest something, obviously the way the culture work in UK, they will not say do this. They will suggest you. They might say, Doctor, if we do this, but if they are saying something, that means a lot. Don't take it lightly and brush it off, because they have dealt with the situation. Consider very carefully what they are saying, and I think it's right. And they are giving you some good suggestion to save patient and save your back as well. At the same time, also be very careful. The working with you, develop good relationship, be chat with them. Obviously we're not just there just to do our job and okay. A person who is liked by everybody is successful. They will give you feedback. Consultants will always, or your educational clinical supervisors will pay attention to what your colleagues are saying about you. If you answer your beliefs promptly, you're looking after the patients, they will actually provide good feedback, and you will get a reference. Because when you apply for a next job, or after 2 years you plan to come back to UK at some stage, you will be using this consultant. And if you have a good reputation, they say you're a hardworking person, everybody liked you, then there's much higher chances of you getting the job. Two important points in terms of, we had some bad experiences. We've seen a registrar, or coming from Pakistan, and teach the content in a ward round. I mean, I don't know why he did it. Okay. Even if consultant is saying something wrong, and maybe your knowledge is amazing and you're a gold medalist, but obviously there is a sensitive way of discussing. If you are disagreeing with someone, then you can speak to the consultant after the ward round, that you thought about this and what is this, and they will justify, explain, or they might accept. Okay, and they say, sir, this is wrong, it should be done like this, and then the life of that doctor was made hell. Okay, they are well connected, they all know each other, and if it doesn't matter what you say, everybody will listen to what consultant says about you. If they you are rude, you don't know your stuff, and they will challenge you, they will make your life miserable. Okay, it seems like common sense, but I have seen example, I have dealt with these kind of situations where the person really struggled, and then obviously they had to leave and quit, and it was, and no references. So obviously we are here to help you, we are here to guide you. If anyone is asking any questions, if anyone says your performance is an issue, or any incident happens where you're involved, do not reply to them, get in touch with us. We are here to help you, because that initial response and how you handle makes a huge difference in terms of the outcome of that. Obviously, sometimes people give statements and then they are trapped based on what information you give them. So get help early. And with that, I think we will close unless anybody has any questions. And I think we've ran over time, but I let it go because I think this is very useful information which was being shared, and it will be helpful for you in future. Go to our website, appsuk.org, and our website has the email, the email address, it has the mobile number, you can contact us through that. Or if you're in the group, then you can put any issues in the group and contact us. I'm in that group as well. So best wishes. We hope see you sometime in UK. And with that, we will conclude the meeting. Thank you. Thank you, Dr. Abdul. Just one thing, they were asking, how can they download the recording? Is there a link that they can be given, or how do we do it? Put a link in the group. Yes. Okay, thank you. Thank you. Take care. Okay, thank you. Take care. Allah Hafiz.